Hello and welcome. This is Deepak Mishra, and I welcome you all to this channel. Today, we have a guest with us who has come on this channel to share his insights and perspectives about the system of medical PG in Germany. I will allow him to introduce himself. Please introduce yourself to our viewers. So, hello everyone. My name is Sankash Malik and I come from New Delhi. I've done my MBBS from All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, and I am currently working in Vissel Surgery in Germany. The reason that you are today on this channel is that you have passed the Fachsprachprüfung exam, which is the first step towards medical PG in Germany. That is a licensing exam, one of the licensing exams. And many congratulations for that, first of all. Thank you very much. Yeah. So tell us, what was this exam? How was this exam for you? So actually, I already knew the pattern of the exam. It takes place in there are three tiles, three parts of the exam. First is the Mündliche tile. We have to. There's a patient, or actually an actor, and we have to converse with the patient and take history and make our points of that. We have 20 minutes for this tile, and after that, second tile of the exam is written tile. Here we have to write, we are given a formula, a bogan, where we have to write the history that we have taken in the first part of the exam, and then we have to also write the further investigations that we want to take, and what is our Fadax diagnosis, differential diagnosis, and what would be the therapy if our Fadax diagnosis is bestated. So that's the second part of the exam. Mhm. Yeah. And in the meantime, we also receive a phone call from Labor, and they tell us an important value, for example, natrium or kalium, sodium or potassium, and we have to note it down and then give it further in the third tile. That's important for the third tile. The third tile of the exam is now actually the viva. It's all the three tiles are for 20 minutes. So that now we have a viva with two shepherds, two HODs for again for 20 minutes. So first of all, they would ask about the details of the patient, what was the history. You can also be asked to present the history once in German, or that can they most of the times they don't ask so much, they just want some details, and then they start with viva. The thing about this exam is that if you answer right or wrong is not that important. Important is that they just want to know if you can converse in good in German. You can understand the patient, you can talk to the patient, you can talk to the other colleagues of yours, and you can converse with them or not. So that's the most important part for the exam. Okay. So does that mean that if you don't have any medical knowledge and you just have the language skill, will you pass the exam? I didn't get your question No, because of network. because we have a network problem today. Um, the question was, does that mean that one does not need any medical knowledge, just the language skills to pass this exam? Do you mean that, or it's not like that? So actually, what the pattern of the exam says that medical knowledge is not important, but I would say that it's not always the case. So some basic medical knowledge they expect that you are a doctor, you should have at least some basic knowledge. If you don't know some basic things, then there can be a problem. But wie gesagt, the exam is only a language exam and not a medical exam. So I would say that around 10 to 30% of the exam is knowledge, and rest all is just language. Okay, okay. I mean, but then 10 to 30% is also not like, it is quite significant, because why I asked you this question specifically is that many people say that, okay, it's just a medical terminology exam. We will go, we'll ratify all the sentences and the terminology, and I will take the exam and it will be done.
तो ऐसे ऐसे होता है क्या, मतलब विल स्विच द लैंग्वेज फॉर द व्यूअर्स, वी विल स्विच द लैंग्वेज, दिस इज अ न्यू एक्सपेरिमेंट दैट आई एम ट्राइंग टू डू, विल स्विच द लैंग्वेज एंड सी हाउ द रिस्पॉन्स ऑफ द viewers is. I'm very glad, I'm welcoming the comments of viewers on this video to find out what do they like. Do they like that I should keep it completely in English, or does it make, because English is not my mother tongue and I believe that neither is yours, right, Sankash? So we try to keep it in English, so that because it's a professional language in India and everything. But I would like to experiment it with our English kind of conversation that gives us more freedom and more freedom to speak with clarity. Do you agree with that, Sankash? Yes, I would agree to that. So I will also try from Okay, सही है। तो now. मैंने ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि तो इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, और दो आई यूज्ड टू थिंक दैट इट इज, बट जब से मैं जर्मनी आया हूँ आई हैव रियलाइज्ड नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। या अम, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एफएसपी के बारे में। पैटर्न तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है। थ्री थ्री पैटर्न्स बेसिकली, थ्री पार्ट्स बेसिकली। नाउ डिफिकल्टी लेवल, वेयर डिड यू टेक दिस एग्जाम, कहाँ लिया आपने एग्जाम ये? डिसऑफ। डिसल्डॉर्फ में, नॉर्दर्न वेस्टफालन में। ओके ओके, ऑल राइट। सो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि, या बताते हैं कि ये एग्ज़ाम तो बहुत इजी एग्ज़ाम होता है एंड टेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम है, खाली मेडिकल नॉलेज नहीं चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज क्या होता है इस एग्ज़ाम का, लाइक व्हाट इज, कुछ है स्टैटिस्टिक्स बारे में आपके पास? स्टैटिस्टिक्स, ऑल्दो आई हैव फाउंड सम स्टैटिस्टिक्स, मुझे एक टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ स्टैटिस्टिक्स मिले थे, बट आई डोंट नो हाउ recent they are, but I've known around 10 20 more than 20 people who gave this exam, and around 10 of them passed and 10 of them did not. So on an average we can say around 50-60%, 40 to 60% is the passing rate. मेरा भी डेटा यही है कि लाइक, अब आई हैव बीन फॉलोइंग दिस एंटायर थिंग फॉर, जब से शुरू हुआ 2015 में, जब ये एफएसपी शुरू हुआ था पहली बार, तो मैं तो तभी से फॉलो कर रहा हूँ। और तभी से तक का मेरा डेटा भी वही है कि ना 50-60% लोग पास होते हैं। बेसिकली दैट मीन्स दैट अगर दो लोग जा रहे हैं एग्जाम में से, तो एक आदमी फेल होके आएगा उसमें से। तो ये बात मैं सबको बताते रहता हूँ कि देखो यार, तुम ना इतना लाइटली मत लो। ऐसा नहीं है ना कि बहुत ईजी एग्जाम है, एग्जाम भले ईजी होगा लेकिन फिर भी आप फेल करोगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन, जो प्रिपेयर करते हैं वो पास हो जाते हैं, और जो थोड़ा लाइटली ले लेते हैं कि अच्छा लैंग्वेज ही तो है, हो जाएगा, तो फिर उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सही है। Say once again, I'll say again and again that language is the most important part of the exam. राइट राइट। चलो ठीक है। अब एक सवाल, अब ये तो हमने बात किया कि यह पास द एफएसपी एग्जाम। तो एफएसपी एग्जाम होती है लाइसेंसिंग एग्जाम, राइट? तो अब इस एफएसपी एग्जाम के बाद कैन यू वर्क एज ए डॉक्टर इन जर्मनी? Yes, after FSP exam, you get, although you know that much better than me, after FSP exam, you can apply for a Berufserlaubnis. First of all, you need a Stellenzusager for that. हम्म। If you have a Stellenzusager, with that, you can apply for a Berufserlaubnis. अच्छा, और बरूफ सर, अभी स्टेलन सुजागा आपको तो, आपके पास तो Limited ऑलरेडी for है, two राइट? years. You have Yes, a Stellan Suzaga in which yes. department? Visceral surgery. Visceral That surgery, is general and gastrointestinal surgery in GI Germany. surgery. That yes is yes yes allgemein wonderful, known. Yeah, yeah. वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी रास्ता बहुत लंबा होगा, 6 इयर्स का रास्ता होगा, बट इट्स कभी ना कभी शुरुआत होती है, तो ये शुरुआत है। तो होपफुली अब सब कुछ Thank अच्छा you. हो। Thank you very much. Yeah, you will have a time till your approbation exam. This work will not be counted as PG, but after approbation exam जो हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो PG काउंट होगा, राइट? ऐसा ही है ना? Yes, exactly. ठीक है। Exactly. ठीक है, तो चलो अभी ठीक है। अभी हमने एफएसपी की बात तो कर ली, हमने एफएसपी के बाद जो होता है वो भी बात कर ली। अब हम पहले तो ग्राउंड क्वेश्चन पे आते हैं कि जर्मनी का डिसीजन कैसे आया? So that I will start about जब मैं internship कर रहा था 2021 में। अच्छा।
So COVID, I got infected, and there was some time I was in isolation. अच्छा. So at that time, I got some time to think, what do I actually want to do? हम्म. जब तक throughout my MBBS, I prepared but as soon as I came to internship, I realized that is this really what I want to do throughout my life? I looked at the residents, I looked at the professors. I don't say that they were not good or what they were doing. I didn't appreciate that, but at some point I thought that this kind of life, I don't think I can live this kind of life. ओके. सो अच्छा, तो देन यू थॉट दैट फॉरेन कंट्री में बेटर कंडीशन होंगी, वर्किंग कंडीशंस, एंड यही थॉट होता है मोस्टली तो कि फॉरेन कंट्री में हम लोग सीरियल में जो देखे रहते हैं हाउस में और डॉक्टर वो ग्रेज एनाटॉमी में भी लगता है कि अच्छा ऐसा ही होगा. Yes, exactly. And not only that, मुझे हमेशा से रिसर्च में भी काफी इंटरेस्ट था, तो मैं चाहता था कि मैं थोड़ा डेवलप्ड एनवायरनमेंट में जो है अपनी रेजिडेंसी करूं, एंड थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड जो है मेरा हमेशा से माइंडसेट था. तो मैं थोड़ा इस वजह से मैं चाहता था किसी ऐसी कंट्री जाना जहाँ पे मेडिकल सिस्टम एडवांस्ड है. ऑल्दो हम्म. इन इंडिया थ्योरेटिकली हमारा मेडिकल सिस्टम काफी अच्छा है. सो यूनिवर्सिटीज में जो थ्योरी है, दैट आई वुड से इज रियली गुड. बट व्हेन वी कम टू क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल, जो कुछ मैंने अपनी बुक्स में पढ़ा पूरी एमबीबीएस में, वो एक्चुअल में मैंने प्रैक्टिकली होते हुए नहीं देखा. देयर हम्म. आर मेनी रीजंस टू इट. One of them is infrastructure. Obviously, we are a developing country, so we don't have so much infrastructure. हम्म. So at that time, I thought that to be at par with the world, we have to go to some country which is at par with the world. करेक्ट, करेक्ट. दैट वेरी वेरी गुड थॉट. आई लाइक दिस थॉट. दूसरा चीज़ ये भी होता है कि कंपटीशन भी बहुत है ना इंडिया में टू बी. Exactly, competition भी बहुत है, but at some point, I'm really sorry to interrupt in between. नहीं, ठीक है. So at some point, what I realized is is this competition, all this hard work that we are giving for a branch, is that really worth it? एग्जैक्टली, So एग्जैक्टली माई I थॉट. think that you will also मैं अपना exactly थिंकिंग you प्रोसेस will बताता हूँ. also agree to this. इसमें ना मैं मेरे पास ये जो द सिस्टम दैट थॉट प्रोसेस दैट यू मेंशन्ड ना, तो मेरे साथ भी हुआ था ऐसे. एंड इट वाज 2012, ईयर 2012. ओके, 11 साल पहले. तो मैं यूएस से आया था. आई वाज इन द यूएस वो इलेक्टिव्स करने के लिए. फिर मेरे यूएसएमएलई के स्टेप्स देने थे ऐसे. एग्जाम एग्जाम दे लिया. फिर मालूम पड़ा कि अच्छा ना ये ना हमसे होने नहीं वाला है. बिकॉज आई वांट टू गो इनटू ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा, एंड यूएस में ऑर्थोपेडिक्स ट्रॉमा करना तो फॉरेनर के लिए. जबकि मेरा कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं था, कुछ नहीं था, पहले पता नहीं था. इग्नोरेंस था या फिर स्टुपिडिटी थी, टाइम बहुत वेस्ट किया. तो बाद में मालूम पड़ा कि अच्छा ना इसमें तो होने वाला है नहीं. देन वो ऑप्शन वाज कि चलो ठीक है, सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, दिल्ली जाओ, दिल्ली में जॉब करो, साथ में पढ़ाई करो, या फिर 2 महीने जॉब करो, पैसे कमाओ, एंड फिर कोचिंग करो साल भर. सब लोग वही कर रहे थे. मेरे रूममेट्स जो थे वहाँ पे थे, मैं चला गया वहाँ पे, साल भर में वहाँ था. बट मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन करी फिर, क्योंकि मेरे साथ भी घूम फिर के ऐसे ही हो रहा था कि आई एम नॉट शाई ऑफ हार्ड वर्क. ओके, मैं हार्ड वर्क कर भी दूंगा. एक बार ना मैं पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ गया हूँ, तो पोटेंशियल पे भी डाउट नहीं था कि निकल भी जाएगा एग्जाम. ठीक है, ये भी था कि ना हाँ ठीक है, सबका निकल रहा है, मेरे फ्रेंड्स के, मेरे रूममेट सबका निकल रहा था, क्यों नहीं निकलेगा ना. उनका निकल रहा, अपना भी निकलेगा. तो निकल जाए. लेकिन उसके बाद क्या, दैट वाज द थिंग. वो कि ना मैं कर तो दूंगा हार्ड वर्क, मैं एग्जाम भी निकाल लूंगा. उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद वही करूंगा. मैं देख रहा हूँ सामने जो लोग जो सक्सेसफुल हैं, जो टॉपर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद वो 3 साल का एमडी या एमएस या जो भी है, उसके बाद फिर से करो, उसके बाद फिर से आओ, और उसके बाद फिर कॉरपोरेट में जाओ, और फिर कॉरपोरेट में परसेंटेज सिस्टम और ये सिस्टम और वो सिस्टम पे तुम फिर काम करो. देन योर बिजनेस स्किल्स लाइक मैटर मोर. मार्केटिंग स्किल्स कैसे, बिजनेस स्किल्स कैसे हैं, वो कैसे. तो आपका जो कोर कॉम्पिटेंस था, दैट यू कैन बी ए वेरी गुड सर्जन, वो तो ठीक है. वो भी आपको मेंटेन करने के लिए बहुत लोगों से कॉम्पीट करना पड़ेगा. यू हैव टू बी रियली गुड एट योर जॉब, तब आपकी कोई वैल्यू है मार्केट में. तो ये सब था ना, मतलब कि ठीक है, ये
सुनने में सुनने में अच्छा लगता है कि ना बहुत आप क्रीम ऑफ द क्रीम हो, लेकिन रियल लाइफ में आपको बेनिफिट कुछ खास मिलता नहीं है उससे। इट्स टू मच हार्ड वर्क फॉर लाइक नॉर्मल रिवॉर्ड्स। दैट वाज माय थिंकिंग, लाइक ये ना कोई सेंस नहीं बनता है करके। एंड देन आई वाज था कि मैं इंडियन एग्जाम तो दूंगा ही नहीं। फिर मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स भी थे कि यार तू पागल हो गया है क्या, मतलब देख आपका। एंड हो भी रहा था ऐसे, मेरे रूममेट से एक का एम्स चला गया, एक पीजीआई चला गया, और बाकी लोग जो थे उनका अगली बार जो उन्होंने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया उसमें उनकी सीट्स निकल गई, और मैं बच गया था पूरे में से जिसका कुछ कोई नहीं हो रहा था। तो दैट वाज, मुझे अभी याद आ गई अपनी अपना वो टाइम व्हेन यू सेड ना कि वो तो थॉट प्रोसेस था। तो मेरा भी वही थॉट प्रोसेस था, लेकिन मैं उसमें सोच लेता कि ठीक है एमबीबीएस तो है ना, तो कुछ तो 50,000 की नौकरी तो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन फॉर दैट आई विल नॉट लाइक गेट इनटू द रैट रेस। अपना रेस मैं खुद ही बनाऊंगा। तो ये था मेरा भी थॉट प्रोसेस। आई एम श्योर जो ऑडियंस हमारी देख रही है, जो उस फेज में है लाइक आफ्टर एमबीबीएस या फाइनल स्टेजेस ऑफ एमबीबीएस और पीजी करना है, दे वुड आल्सो लाइक टू शेयर देयर थॉट्स एंड ओपिनियंस। आई विल बी वेरी ग्लैड टू सी दैट इन द कमेंट सेक्शन कि वो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, या कैसे उनके थॉट प्रोसेस हैं। तो ठीक है। तो चलो हम कंपेयर करते हैं कि मोस्टली इंडियंस जो होते हैं दे गो टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, टू यूएस, यूके, Exactly. ऑस्ट्रेलिया। That was also my point. हाँ, तो फिर जर्मनी कैसे आ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने भी एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी के बारे में, सो 90% दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वेंट थ्रू. All of these thoughts came to me. All my batchmates, everyone, they were going to other great institutes, AIMS, PGI, and other institutes. So that the whole process was same in my head. So at that time, I decided no, that I want to go to some better country. Exactly what you are speaking. First of all, to my mind came USA, England, or Australia. These are the English speaking countries. And for Germany, as you said, that you have to learn one another language. But the only point in favor of Germany at the beginning was that here you can get surgical residency. And for me, it was clear, either I would do surgery or I would choose another branch for me. Like I won't do medicine at all. Either surgery or nothing. So it boiled down to a safer and a better option. I knew that for US only, not only that FMGs, it's harder to get surgical branches in US. That's obviously the first most important point, but the amount of investment, time, energy, and money that you have to give in for USMLE, and after that, the stakes are very high if you would be getting a surgical residency. I could not have risked my career for that. So I knew that in Germany, I would obviously the journey is tough. No one can say that coming to Germany is easier. I would rather say that getting into some good aims or other good medical colleges in India was easier for me to than coming to Germany, because the language learning is actually hard. And I think that at some point you will also agree to that. Definitely, language learning, it is, language is a persistent board like बैरियर। ऐसा नहीं है कि ना 2 साल में लैंग्वेज सीख लिया और अपना एक्सपर्ट हो गए लैंग्वेज का, आपको बैरियर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। मेरे से पूछो, मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ, मैंने फाकात से यहाँ कंप्लीट किया है। मैंने फाकात से एग्जाम में पार्टली व्हेन आई वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे आंसर लाइक आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू द प्रोफेसर, तो मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया था, लाइक आई वाज एक्सप्लेन द नर्व। अब मुझे ना ऑर्थोपेडिक एग्जाम में नर्व का फ्लो पूछ रहे हैं कि ना सायाटिक नर्व होता है वो कहाँ से जाता है, कौन से कहाँ किस किस मसल को सप्लाई करता है, तो दे गोइंग इन टू मच डिटेल ऐसे। तो अब उतना तो पढ़ के तो मुझे एनाटॉमी का फर्स्ट ईयर का नॉलेज जो था वही था। तो फिर मैंने उनको इंग्लिश में जो हमने पढ़ा हुआ है वो समझाना शुरू किया कि ऐसा नर्व होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, इंग्लिश बट ओके। तो एंड दे वर फाइन विथ इट। तो दैट दैट इज व्हाट आई मीन कि वो फॉल बैक जो होता है ना, जैसे तुम थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस झेलते हो, ये तुरंत तुम्हारा फॉल बैक हो जाता है इंग्लिश पे, तो यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस। ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छी जर्मन बोलते हैं और हैं भी, इनफैक्ट मैं जानता हूँ, देखा हूँ मैं लोगों को, वो स्पीक मच बेटर, उन्हें राइट मच बेटर। लेकिन मेरा ऐसा रहा है कि मैंने उस पर कभी फोकस भी ज़्यादा नहीं किया है
कि काम चल रहा है ना, चल रहा है, ऐसे ऐसे टाइप से स्टार्टिंग में किया था जब करना था, उसके बाद अभी फोकस नहीं किया कभी मैंने। करना चाहिए आइडियली, बट नहीं किया, ठीक है। तो दिस लैंग्वेज, दिस बैरियर, ये अभी तुमको है, बट व्हेन यू गो फर्दर अप्रोबेशन देने के बाद में रेजिडेंसी में, इट विल स्टिल बी देयर इन फ्रंट ऑफ फाइव नेटिव स्पीकर। जब वो कॉन्वर्जेशन चल रहा होगा, उसमें तुमको अपनी बात रखनी है। इट विल टेक फ्यू ईयर्स टिल यू रीच दैट पॉइंट कि ना, अच्छा चार लोग बात करें तुम भी उसमें कुछ बोलोगे, अदरवाइज तुम उसमें साइलेंट वो लिसनर ही रहोगे। तुमसे कोई कोई पूछेगा तब तुम आंसर करोगे। तो ये बैरियर है, दैट इज अ फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो ऑब्वियसली वन So हैज। as you said exactly that beginning में मैं भी बहुत ज़्यादा motivated था that no I have to master the language. I gave in a lot of hard work in it also to master the language. Obviously the words we can speak but the pronunciation is different. For example, once my Uber assistant asked me what are the muscles in front of thyroid, because we do too much thyroid here. So I knew that what are the muscles like thyroid, the omohyoid, thyroid, and Ecod होता है। sternothyroid and sternohyoid. हम्म, So all these muscles I knew of English, but the pronunciation which she said is was totally something different for me. So the हम्म, language barrier, I understand that that will never go. But after a certain point of time, I realized that knowledge is much important. हम्म, Language is only a medium to convey. If you can yes, convey your things, yes, then it's not that important. yeah, yeah, Knowledge, if you have good knowledge, I have also seen people who can speak very good German, but after a certain point, they are not able to grow more. mm-hmm, If your knowledge is also at par, then only you can grow. That's what I realized, and therefore I am not much interested in working hard on language anymore because mm, I know that I can converse with them. yeah, yeah. No, because it's hard work. I mean, करना चाहिए. Ideally, everyone should do it. I'm not saying that you should not do it. I'm saying that I motivate everyone that to focus on language. In our consulting program also, we focus so much on language. Like, so biggest वो होता है कि ना, language करो पहले अच्छे से, because they will face problem if they don't do it well. So even at your stage, I would recommend a couple of years. So you will have to think about what you write, what you speak. थोड़ा सा practice करना पड़ेगा, थोड़ा सा देना पड़ेगा. But then after that, फिर ठीक है, फिर चल जाता है फिर. And nowadays we have Chat GPT, so you can put entire thing in it, and like comes in very improved version of brief scribe and all. So that I started using like in the hospital also. So yeah, ये था हमने लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज बैरियर के बारे में. एंड वर्क लाइफ बैलेंस, what do you think about the work life? Was it also a factor why you decided to come to Germany? That was not basically the most important thing to me, work life balance. Because here also, if you say that work life balance is much better, so it depends where you are working. If you Yeah. are working in a small hospital and even some private clinic, then obviously you will get more time, more free time. You will have work life balance. But I heard that as soon as you go to Uniclinic, Mm-hmm. then work-life balance is not there also very good. I have heard that you have worked in Uniclinic, so Yes, yes. you can tell much better about that, na? Yeah. See, Uniclinic, I have worked at two unis. At present, where I'm working is also Uniclinic, but it's a specialized center for orthopedics for Uniclinic. So we don't have that much chaos that, like in the actual trauma center in the Uniclinic. But 1 year I was at the trauma center also in Uniclinic. And before that also, I was since 2018, not 18, 19, I'm working in the uni system. So university system. So uh, 2019, I was working in Halle in Sachsen-Anhalt, and there I got exposed to the university. I wanted always to experience that because 3 years before that, I have worked in a smaller hospital, and then you sometimes feel that okay, now here I am comfortable, and I am a person which comfortable हो जाता है ना, फिर मेरे को बोर होने लगता है कि अब क्या करें, मतलब अब नया क्या करना है, अब क्या करना है. तो फिर मैं कंफर्टेबल हो गया 3 साल में वहाँ पे, फिर मज़ा आने लगा, सब फ्रेंड हो गए, सब मतलब लोग अच्छे से, लाइक दे यूज टू रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं बहुत ऐसे डिलीजेंटली काम करता था. तो इट्स आई एम नॉट प्रमोटिंग कि सबको ना ऐसे गधों की तरह काम करना चाहिए. मैं बोल रहा हूँ कि ना, अब आप ऐसे काम करते हो ना, तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं. ठीक है. तो वो फिर कंफर्ट आ जाता है वहाँ पे फिर.
तो देन फिर आई एम सेट कि ना चल ठीक है, हो गया 3 साल, अब छोटी जगह पे कर लिया काम, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी व्हाट इज इन द वर्ल्ड ना। नहीं होगा तब तो आना ही है यहाँ पे। तो फिर आई अप्लाइड फॉर ऊनी सिस्टम्स, जो ऊनी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जितने भी ऊनी हैं बड़े बड़े, मतलब 12-20 एप्लीकेशन के आसपास मैंने भेजे थे 2018 के एंड में। और फिर उसमें से 3 जगह मेरे को सिलेक्शन मतलब हो गया था। फिर मेरे घर के पास जो था वो ऊनी हालत था वहाँ पे, बिकॉज इट वॉज ओनली 200 किलोमीटर्स। और मेरे साथ ऐसा था कि मेरी वाइफ जो है शी वॉज वर्किंग इन द सेम हॉस्पिटल जहाँ पे हम लोग पहले साथ में काम करते थे। तो आई डिड नॉट वांट टू, जैसे बताया ना कि मेरा हमेशा एक वो घर वापसी का रास्ता में रख रहा था कि ऐसा नहीं हो कि ना टोटली मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं हम लोग, एंड देन इट डिड नॉट वर्क आउट। तो मैं सोचा था कि ठीक है, देन वी व्हाट वी डिड इज दैट शी स्टेड देयर, शी वर्कड इन द सेम हॉस्पिटल, कंटिन्यूड टू वर्क, एंड आई वेंट आउट टू हाले टू सी हाउ इट इज इन uni सिस्टम एंड हाउ इज दैट प्लेस। सो हाले शहर मुझे उतना पसंद नहीं आया, uni वॉज वेरी गुड, बट शहर मुझे उतना पसंद नहीं आया। तो फिर हम लोग वहाँ से डिसाइडेड कि चलो ठीक है वेस्ट डॉइचलैंड चलते हैं। तो हम लोग फिर इस तरफ मैंने अप्लाई करना शुरू किया, एंड देन वी मूव्ड टू एसन। तो 2019 में हम लोग, तो ये जो तब सबसे मैं हूँ तो उन्हीं सिस्टम में जो वर्क एक्सपीरियंस का जो एक बात है, इट्स टोटली डिफरेंट, द माइंडसेट इज डिफरेंट। छोटे हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं फॉर द सेक ऑफ वर्क, लाइक दे वांट टू फिनिश द वर्क एंड अर्न देयर सैलरी, उनको छुट्टी पे जाना है ऐसे। उन्हीं सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, दे वर्क फॉर पैशन, दे वर्क फॉर परफेक्शन। उनका ऐसा होता है, उनको फॉर देम, उनको लाइक नाउ द जेन जी, द न्यू जनरेशन जो है, दे माइट से कि अच्छा ओवर टाइम हो गया है, इट्स नॉट अवर जॉब और ऐसे। लेकिन जो थोड़ा ओल्डर जनरेशन जो है, दे डोंट थिंक कि ना हमारा टाइम हो गया है, जो भी है दे विल फिनिश द वर्क एंड दे विल इम्पेकेबल काम खत्म होना चाहिए लास्ट तक उनका, और तब वो घर जाएंगे। उसमें अगर हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा रहना पड़ रहा है, देन दे विल डू दैट। ओके, सो उसमें दैट इज अबाउट द वर्क एथिक, आई एम सेइंग कि ना वो ज़्यादा, बिकॉज व्हेन दे एंटर दैट सिस्टम दे नो दैट, वो एक्सपेक्टेड है उनसे। उनके सीनियर्स को भी पता है, उनको भी पता है, उनके जूनियर्स को भी पता है। तो व्हेन इट इज नोन तो ना इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, योर लाइक नॉर्मल काम है वो। दैट इज वन थिंग। वहाँ पे काम बढ़ ऐसे जाता है ना, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ रिसर्च ऑल्सो। रिसर्च, टीचिंग जो है स्टूडेंट्स का टीचिंग, दूसरे नर्सिंग का स्टाफ का टीचिंग, जो भी है उसमें, तो यू आर इन्वॉल्व ऑन दोज प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। पीपल राइट डॉक्टर अबाइट द प्रमोशन एंड ऑल। तो उसमें भी फिर टाइम ना, आपको कहाँ कितना टाइम आपने पढ़ाई में लगाया, काम में लगाया, और कितना टाइम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाया, देर इज वेरी लिटिल डिलीनिएशन, देर इज नो लीनिएशन। आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है कि सब कुछ आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो। तो देन दैट इज हाउ, तो दैट इज टोटली लाइक व्हाट यू से वर्कaholic कल्चर ओवर देयर, एंड पीपल, मेनी पीपल लाइक दैट। ओके, मेनी पीपल लाइक दैट, दैट्स व्हाई दे स्टे देयर। उनको अगर आप स्मॉल हॉस्पिटल में लेके जाओगे तो उनको ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा कि क्या करूँ मैं पूरे दिन यहाँ पे। सो बिकॉज दे आर यूज टू दैट वेरी हाई वॉल्यूम हाई कैओस सिचुएशन। ठीक है, तो वैसे डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, उनके अलग अलग सिस्टम होता है। बट मेरा ओपिनियन और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एक्सपीरियंस करना चाहिए। कि ना जब आपका अभी योर स्टार्टिंग, तो अभी 1-2 मिनट, एक दो मिनट क्या है ना, 1-2 ईयर, 1-2 ईयर्स जब हो जाते हैं, तो उसके बाद ना यू स्टार्ट अप्लाइंग टू द यूनी सिस्टम, और एक बार राउंड मार के आओ, देखो कि मजा आता है कि नहीं आता है। So अगर actually, I want to work in a university also. I told you that why the reason why I came to Germany. हम्म So what you just explained is actually my reason why I came to Germany. What I actually good in this system, what I find good in this system is that here there are obviously not so many patients in comparison to India, but at one patient you have more focus. हम्म Like for example, the sonography. So obviously sonography is something that we are not exposed to in India, हम्म but here every clinician knows how to do sonography. And yes sonography, I think that is one of the most important tool for a surgeon. Not only sonography and X-rays also. Like you are from orthopedics, you would know better. yes yes, I totally agree. So see, Teams also should know how to see an X-ray. that is like I went.
last year I went to my native place, and there was a person with a fracture. Like, ऐसे it was not sure, मुझे I was seeing that X-ray और मुझे fracture दिख रहा था उसमें कि ये तो fracture है. It was a sprung link. And वहाँ पे it was orthopedic surgeon did not see that. He said कि radiologist उसको वो करेगा पहले तो. ठीक है. व्हाट यू से द बेफुंडुंग उसका रिपोर्टिंग करेगा. एंड रेडियोलॉजिस्ट अब वीकेंड है, Yeah, रेडियोलॉजिस्ट कहाँ मिलेगा? तो आई एम लाइक यार ये कैसा सिस्टम है ना, मतलब आई एम देखो ऐसा, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, ओके, बट वहाँ पे उस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि ना ये रेडियोलॉजिस्ट, और रेडियोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आता है उसमें लिखता है कि ना नो फ्रैक्चर. ठीक है. एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट मी कि यार कैसा कैसा ऑर्थोपेडिक है ये. बाद में हमने एमआरआई कराया, तो एमआरआई में फ्रैक्चर दिखा फिर. तो सीटी नहीं कराया, एमआरआई कराया, बट एमआरआई में भी दिख गया फ्रैक्चर. तो आई एम लाइक यार ये सब ये जो चीज़ें हैं ना, व्हेन आई केम बैक हियर आई टॉक्ड दिस स्पेशल केस जो है ऐसा हुआ, मैंने अपने कंसल्टेंट से बात किया ऐसे कि ऐसा होता है. एंड ही इज़ फ्रॉम ग्रीस. ठीक है. वो काफ़ी लाइक नॉलेजेबल एंड वेरी लाइक शांत सुनेगा और तुमको बहुत वैल्यूएबल एडवाइस से बातें बताएगा. तो ना वो ऐसा ऐसा टाइप का आदमी है. तो उससे मैंने सिर्फ बैठे थे, हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, तो बताया ऐसा ऐसा केस था. तो वो बोलता है कि देखो दैट डिफरेंस, बोलता है कि मैंने भी ग्रीस में ना बहुत सारे ऐसे देखे हैं. ठीक है. चीज़ें ओवरलुक हो जाती है, चीज़ें ये, बिकॉज फॉर देम बिग थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. कि अगर ना इट्स अ बिग फ्रैक्चर दैट दे विल नोटिस, बट जो फाइन हाइट जो है, स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो जिसके बारे में जर्मनी में हम लोग बहुत ऐसे वो बना के रखते हैं कि अच्छा देखो देर इज़ अ फ्रैक्चर, तो इसको तो ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. तो वो वहाँ पे वो इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है हो जाएगा ठीक, या और थोड़ा पेन भी होगा तो क्या हो गया. तो देर दैट इज द थिंग दैट यहाँ पे हम लोग छोटी चीज़ को एमआरआई करते हैं, सीटी करते हैं. एंड मोर यू डू दोज डायग्नोस्टिक्स, more and more you start understanding the mechanism, the fracture, the healing and all those things. तो तुम डिटेल में स्टडी करते हो, तुम यहाँ पे चीज़ों को ट्रीट भी तुम डिटेल में करते हो. तो ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन था इस चीज़ के बारे में. हम लाइक यार इन दिस केस तो इट मेक्स सेंस कि बात सही है कि वहाँ पे अगर मान लो कोई बड़ा फ्रैक्चर होता तो आदमी ऑब्वियसली बोलता कि चलो फ्रैक्चर है, इसको ऐसे इलाज करना चाहिए. बट द जो स्मॉल थिंग्स दे डिड नॉट इवन लाइक, वो डायग्नोज भी नहीं किया उसको कि है. तो yeah. To this fact, there are also some myths that I wanted to discuss. Like I have some little experience, so and I would like to gather experience from you also. So you have been working here for a long time. You can tell better. Like some people say that Weiterbildung in Germany is not that good. Residence is not that good. So what are your views about it? ओके. सी हियर, अगर कोई ऐसे बोलता है ना कि वाटर बिल्डिंग किसी एक कंट्री की खराब है, तो फिर वो मैं किसी भी कंट्री के लिए बोल सकता हूँ. यू कैन नॉट जनरलाइज इट. यू कैन नॉट जनरलाइज इट. यू कैन, आई हैव सीन सर्जन्स हु आर जस्ट लाइक फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर पास आउट जो यहाँ पे हुए हैं, एंड द वेरी फाइन सर्जन्स. ठीक है. जो सिक्स्थ ईयर में जो चीज़ अब सी, यहाँ पे ट्रेनिंग जो है इट सेल्फ इज 6 years. ओके. दैट मीन्स अ थर्ड ईयर गाय फ्रॉम इंडिया फॉर एग्जाम्पल, थर्ड ईयर वहाँ पे फाइनल ईयर हुआ, और यहाँ पे सिक्स्थ ईयर फाइनल ईयर हुआ. तो अब थर्ड ईयर को थर्ड ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि थर्ड ईयर जो जर्मनी का होगा वो तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा होगा. इनफैक्ट फोर्थ ईयर भी कुछ नहीं कर होगा. यहाँ पे ट्रेनिंग, सर्जिकल ट्रेनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, बेसिकली स्टार्ट्स अराउंड फिफ्थ सिक्स्थ ईयर, व्हेन यू आर अबाउट टू टेक योर फाकास एग्जाम. उस वक्त ना आप ज़्यादा से ज़्यादा करने लगते हो, बिकॉज फिफ्थ सिक्स्थ ईयर के बाद में, फाकास के बाद, एग्जाम के बाद में, यू आर सपोज टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. दैट इज द प्रॉब्लम यहाँ पे. प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ सिस्टम यहाँ पे ऐसे कि पहले यू नॉट डू इन मच, और लास्ट लास्ट में यू विल डू टू मच, और जैसे एग्जाम हुआ देन उसके बाद 6 महीने एक साल में आप इतना ऑपरेट करोगे कि उसके एक साल बाद यू आर सेल्फ स्टैंडिश, आप अकेले काम कर सकते हो. तो ट्रेनिंग यहाँ पे अब ऐसे सिस्टम है यहाँ पे कि ना अगर आप बोलोगे ना कि फिफ्थ ईयर रेजिडेंट एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या क्या ऑपरेट कर सकता है, तो आंसर वुड बी कि ही कैन, बट फ्यू थिंग्स नॉट इन कंपैरिजन जो फिफ्थ ईयर का इंडिया का रेजिडेंट कर सकता है. नहीं नहीं होगा, इंडिया वाला ज़्यादा करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज मोर पेशेंट एंड मोर. बट यहाँ पे वो सिर्फ सेवन्थ ईयर में आ जाएगी वो चीज़ें. एंड द बेनिफिट इज दैट, तो इसलिए ये जो है ना कि सर्जिकल ट्रेनिंग खराब है यहाँ के, आई डोंट अग्री टू दैट स्टेटमेंट. ऑब्वियसली देर आर प्लेसेस, देर आर गुड ट्रेनिंग प्लेसेस, देर आर बैड ट्रेनिंग प्लेसेस. तो गुड ट्रेनिंग प्लेसेस जो हैं
वहाँ पे एज अ नेम ओनली सेज कि ना वहाँ पे वो स्ट्रक्चर्ड उनके दिमाग में होता है, वाइटर बिल्डिंग जो प्रोफेसर्स होते हैं वहाँ पे, उनको होता है कि उनको अगले जनरेशन को तैयार करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू ट्रेन देम। एंड एंड उनको कैंडिडेट्स भी वैसे मिलते हैं, बिकॉज द कल्चर इज लाइक दिस। उनको इंटरव्यू में ही उनको ऐसा मिलता है कि ना किस में दम है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अब वी आर गोइंग इन जर्मनी, वी आर गोइंग थ्रू आर्ट्स मांगल, राइट, आर्ट्स मांगल, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनके पास डॉक्टर्स नहीं है, वो लोग तो किसी को भी ले लेते हैं, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल जो है उसके पास रिसोर्सेस वैसे भी नहीं है, उसने बस उसका क्लिनिक चलते रहना चाहिए, हॉस्पिटल शुड वर्क, इसलिए किसी को भी ले लिया है। तो इन दैट कंडीशन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट वेरी गुड ट्रेनिंग? बिकॉज जो जो जिसने लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी एरा गैरा हॉस्पिटल है जिसका कोई वो नहीं है, मतलब वो बंद होने वाला है, उसने सम नो डॉक्टर वांट्स टू वर्क ओवर देयर, ओके, बिकॉज नो डॉक्टर वांट, दैट्स वाई उसका स्टेला खाली है ना, कि नो जो डॉक्टर्स हैं दे डोंट वांट टू वर्क ओवर देयर, दे वांट टू वर्क समवेयर एल्स, एंड दे हैव गॉन समवेयर एल्स, दैट प्लेस इज रिमेनिंग। अब फॉरेन से कोई आएगा जिसकी लैंग्वेज टूटी हुई है, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, उसका नॉलेज, अगर एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है तो उसकी नॉलेज भी नहीं होगी अबाउट सब्जेक्ट मैटर, तो उसको 2-3 साल तो लग जाएंगे वो चीज़ कवर अप करने में, कम्युनिकेट करने में। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि फर्स्ट 3 इयर्स में ऑपरेशन सीख जाएगा वो? तो दैट इज व्हाट उसमें ये जो, स्पेशली फॉर फॉरेनर्स, वो जो 1-2 साल का स्टार्टिंग टाइम रहता है, इट टेक्स द लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। आपको नर्स से बात करने आना चाहिए पहले ना, आप ऑपरेट करने जाओगे उसके पहले यू शुड बी एबल टू, इफ सम पर्सन कम्स विथ इन योर नोट ऑफ नामा विथ एब्डोमिनल पेन, यू शुड बी एबल टू डायग्नोज दैट इसको अपेंडिसाइटिस है ना, आपको अनमनीज लेने आना चाहिए, आपको अल्ट्रासाउंड करने आना चाहिए, इसको लैब देखने आना चाहिए आपको उसका, ये सब चीज़ें आप करोगे, तब तो आप बोलोगे ना कि हाँ ये मेरे को आता है, नाउ आई कैन डू अपेंडिक्टोमी, है ना। तो जिसको अनमनीज नहीं लेने आएगा, जिसको अल्ट्रासाउंड करने नहीं आएगा, वो बोलेगा कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अब इंडिया में तो फर्स्ट ईयर में अपेंडिक्टोमी हर कोई कर लेता है, तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है फर्स्ट ईयर में अपेंडिक्टोमी? ऐसे नहीं होता है, यू आर इन अ डिफरेंट सिस्टम। और जब आप 6th ईयर में जब आप पास करोगे, एंड इफ यू चेंज योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली, लाइक अगर ना आप चेंज योर हॉस्पिटल आई मीन अकॉर्डिंगली, तो आपको आ रहा होगा चीज़ें, और नहीं आएगा तो 7th ईयर में डेफिनेटली आ जाएगा, जैसे ही आप निकलोगे फोकस करके, बिकॉज तब आपको करना ही है वो, देयर इज नो अदर वे, ऑप्शन नहीं है। सो सो आई वाज सेइंग दैट कि ये जो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि ट्रेनिंग खराब है यहाँ पे, ऑब्वियसली ट्रेनिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात सच है यहाँ पे, दैट ट्रेनिंग इज नॉन स्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पे जैसे यूएस में होता है कि ना एवरी ईयर यू हैव टू टेक एग्जाम, इफ यू डोंट पास दैट एग्जाम यू विल नॉट नॉट मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक कि ना, इफ यू वांट टू डू सर्जरीज, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, नॉट ओनली सर्जरीज, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वाइटर बिल्डिंग के, आप कोर्सेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बाहर में, आप डिफरेंट टाइप्स के केसेस असिस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपको करना होगा, और उसके लिए फिर आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही आप चले जाओगे मुंह उठा के ना कि हमको ऑपरेशन करने दो, और आपको चीज़ें नहीं आती रही, एनाटॉमी नहीं आती होंगी, तो नोबडी विल लाइक दैट। तो और सेंटर्स आर डिफरेंट, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट इन जर्मनी की ना, अगर आप जैसे व्हेन यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, ठीक है, यू विल डू मे बी 6 मंथ्स 1 ईयर इन दिस प्लेस, यू विल गेट एन आइडिया कि ना किस तरह का प्लेस है ये, विल इट रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स। अगर लाइक यू से कि ना मैं बहुत पढ़ के जाता हूँ, मैं पूरी मेहनत से काम करता हूँ, आर दे रिस्पेक्टिंग इट, आर दे गिविंग यू वॉट यू डिजर्व एट दैट लेवल एटलीस्ट, ठीक है। अगर मान लो 1.5 साल 2 साल वहाँ पे किया एंड यू रियलाइज कि नहीं ये हो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई दूसरे सिस्टम्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, वट एवर, दूसरे को प्रेफर करते हैं मुझे नहीं करते हैं, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि मूव कर जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, एंड स्टिल बी काउंटेड एज पीजी, ठीक है। तो दैट इज वन गुड थिंग कि यहाँ पे ना यू आर नॉट टाइड अप कि एक रेजिडेंसी प्रोग्राम में यहाँ चले गए अब तो फंस गए यहाँ पे, ऐसे नहीं है, यू कैन चेंज, और इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने अपने 6 साल में 4 जगह चेंज की हुई है वो। तो यार डिफरेंट स्पेक्ट्रम भी पता चलता है ना, मैं जब आया था मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज वेरी ट्रामा ओरिएंटेड कि चट फ्रैक्चर ट्रामा फलाना चिलाना, अब मैं हो गया एंडोप्रोस्थेटिक ओरिएंटेड कि ना जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करने हैं अपने को, और ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है।
तो if you, because I got exposure into big endoprosthetic centers and hospitals, और उससे मुझे आइडिया आया कि अच्छा ऐसे होता है स्पाइन सर्जरी, क्या होता है ये क्या, बिकॉज वन हॉस्पिटल डज नॉट हैव ऑल द स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा कि और जो बैड ट्रेनिंग के हॉस्पिटल्स हैं ना वो हर जगह इंडिया में भी है। So I would also like to share my experience till now by this point. तो द गुड पार्ट मेरे साथ अच्छा ये है कि मेरे ही डिपार्टमेंट में एक मेरा सीनियर है, वो इंडिया से है, अराउंड 3.5 ईयर से इसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि हाउ इज़ द बिहेवियर ऑफ ओवर एज्ड andere chef ist gegenüber meinen Kollegen. I just started to speak in German. Excuse me. So how is the behavior? तो मैंने सबसे पहले ये नोटिस किया। तो this guy is working since 3.5 years in this hospital. He's doing most of the gallbladder surgeries alone, thyroid surgeries alone. So he has grown a lot in this hospital. So I saw that if he can do that, then I can also do that. The situation or the circumstances are not against anyone. It's just that how hard you are working and how is the environment. एंड यही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं इस हॉस्पिटल आया। एंड एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, आई ऑल्सो फेल्ट दैट कि इट डिपेंड्स अपॉन यू। इफ़ यू वांट टू लर्न, देर आर पीपल हु वांट टू ट्रेन। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पता है कि हम सारी ज़िंदगी ऑपरेट नहीं कर सकते, आगे किसी और ने ऑपरेट करना है। एंड वन ऑफ आर ओवरऑल्स, he said something that I realized that this person has some vision. He said that ki, I know that I cannot operate throughout my life, and someday I'll also be lying on some of the tables. I just want to know that the guy who's going to operate me can do that. या So या नहीं, इट मेक सेंस ना, तो नॉर्मल बात है, तो समझने की बात है कि अगला जनरेशन जो है अभी, इफ दे विल नॉट ट्रेन तो कैसे बनेगा अगला जनरेशन, तो ये सबको पता होता। अब बात यही है कि आदमी जाता है एम्प्लॉय माइंडसेट से। आदमी जाता है बोलता है कि ना मैं जर्मनी आया हूँ, मैं बहुत मेहनत करना होता तो मैं इंडिया में नहीं कर लेता, मैं जर्मनी आया हूँ वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। ठीक है, मेरे को 4 बजे घर जाना है, रिलैक्स मेरे को जीना है, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं काम करना है। तो जब तुम एम्प्लॉय माइंडसेट से काम करते हो ना, तो सामने वाला भी तुमको एम्प्लॉयर माइंडसेट से ट्रीट करेगा कि जब तुम्हारा टाइम हो गया तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई। ठीक है, और जब तक तुम हॉस्पिटल में हो तब तक तुम हॉस्पिटल का काम करो। इट्स नथिंग अबाउट यू लर्निंग या यू डूइंग, हॉस्पिटल का काम करो वो। लेकिन जब आप स्टूडेंट माइंडसेट से जाते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे सीखना है, ठीक है, तब फिर वो भी टीचर माइंडसेट से आपके सामने बिहेव करते हैं। तो मोस्ट ऑफ, मैं ये मानता हूँ कि ना हम दूसरों में हमेशा फ्लॉज ढूंढते रहते हैं। हमको ठीक है, आई एम नॉट सेइंग द वर्ल्ड इज परफेक्ट, आई एम सेइंग कि ना हाँ होते हैं, लाइक कि ना अनफेयर सिचुएशंस होते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशंस होते हैं, बट पहले तुम अपने आप को तो देख लो। exactly. पहले पहला पहला स्टेप वो होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। देखो, आप जर्मनी में सर्जरी, मैं जर्मनी में सर्जरी करने आया, मतलब मैं यूएस के सर्जिकल रेजिडेंसी नहीं मेरे से हो सकता था, इसीलिए मुझे वहाँ पे नहीं मिला ना, या फिर मैंने छोड़ दिया आधे रास्ते में ही, बिकॉज कि मेरे से नहीं होगा, है ना। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ना मैं तो ऐसा टॉप चीज़ हूँ और तुम मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो यूएस में ही हो जाता, राइट। तो वो नहीं हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ इंडिया में हो सकता था, हाँ हो सकता था इंडिया में, वो बाय चॉइस था, तो उसका कभी पता नहीं चलेगा कि उसके उससे क्या स्टैंडर्ड आपका है, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा बिकॉज यू नेवर ट्राइड इंडिया का। तो ये हमको नहीं समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि वी हैव कम हियर एंड इट्स अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट लैंग्वेज। थोड़ा टाइम हम वैसे भी लूज कर जाते हैं टू अडेप्ट एंड एडजस्ट इन एवरीथिंग। और उसके बाद एक बार जब सेटल हो जाते हैं, देन यू हैव टू फुल 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 पैडल से काम करना चाहिए। और तब देर आर पीपल जो फॉरेनर्स हैं और यहाँ पे रिसर्च करते हैं, पीडी बनते हैं, शेफाट्स बनते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स बनते हैं, तो बनते हैं लोग, एंड दे कैन ऑपरेट ऑल्सो प्रिटी वेल। I've also seen many of the overacts. They are not from like from India or from other countries. तो वो बहुत बहुत अच्छा, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, उनका स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मैं एक हॉस्पिटल में एक बार हॉस्पिटेशन करने गया था, तो दिस वाज एडिपोजिटा सिंड्रोम, ओनली गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। So I saw that this guy overacts.
He was doing so good. These surgeries, I have not even seen anyone putting not so quickly through hand, which he was putting through laparoscopic instrument. The thing which I would say that I have experienced in this time, कि यहाँ पे स्कोप बहुत अच्छा है अगर आप सीखना चाहते हो तो everything is given to you, instruments, and there are videos, there are people who are ready to teach you, provided that you want to learn from them. So everything is in front of you. If you want to learn, you just have to go forward and grasp it, like every situation in life. Learn प्री what in पीजी life. मैंने तो फोकस किया कि प्री पीजी में लोगों को गाइड करना या इस रास्ते तक लेके आना ऐसे थ्रू माय चैनल यूट्यूब वीडियोस कोर्सेस एंड कंसल्टिंग प्रोग्राम एंड एवरीथिंग बट देयर आर आल्सो पीपल हु आर गाइडिंग पीपल ड्यूरिंग रेजिडेंसी ऐसी कंपनीज हैं ऑब्वियसली इट्स अ चैरिटी नहीं है यू हैव टू पे फॉर इट बट ऐसे लोग हैं जो कि आपको कोर्सेस ऑफर करते हैं ये करते हैं तो अगर आपको सीखने की इच्छा है तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है सीखने की इच्छा है तो हो जाएगा बस वही है कि आपको एफर्ट खुद करना पड़ेगा ना कोई आपको बोलेगा नहीं कि ऐसा क्यों नहीं किया ये काम क्यों नहीं हुआ वो मोस्टली आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये डिस्कशन जो है ना ये डिस्कशन कभी खत्म होने वाला नहीं है अबाउट बिकॉज इतना इतना एक्सटेंसिव जर्मनी इज अ स्मॉल कंट्री बट इन स्मॉल कंट्री ऑल्सो देर इज लॉट्स ऑफ वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल इट इज चलो Yeah, exactly. the pathway that you chose कि ना करना है या language करना है तो were you like doing it on your own or yeah you had a friend circle people doing things together ये कैसा था Obviously I started alone. In my college मैं किसी को नहीं जानता था जो पहले जर्मन सीखी हो या जर्मनी जाना चाहता हो या इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया रखता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता था। मैंने बस यूट्यूब पे सर्च की एंड थैंक्स टू यू, आई वुड से दैट थैंक्स टू यू आई हैव कम टू जर्मनी, बिकॉज अगर आपकी वीडियोस मुझे नहीं मिली होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि क्या प्रोसेस है कैसे है, बिकॉज देयर इज़ नॉट सो मच इन्फॉर्मेशन आई वुड से। The guidance in India, I could not find proper guidance, knowledge. Everything is quite lacking in a case of Germany. You said it quite rightly that most of the people come to Germany, they think that okay, like we'll be making videos, we'll be guiding other people. But as soon as we start with our job here and Weiterbildung, then our focus shifts. Now we are concentrated on residency. So what you have been doing, I appreciate that quite a lot, because there are many people like me who have been helped by your videos a lot. Like who have been helped by your videos a lot. So the very thing nice is, I knew that. ना प्लीज कंटिन्यू Yeah, please. सुनने में अच्छा So लग रहा है बोलते रहो Germany, the thing is, language, it takes around 1 year or so, but one can learn that language. So I started learning language in around July of 21, and I gave my B2 exam in September of 22. So it took quite, slightly more than 1 year to learn the language, but I would say that I've invested my time for a good purpose, because language till FSP, I would say language is the most important thing. Like at that time, people think that knowledge is also important, but till FSP, I would say that language only language. After FSP, you should shift your focus a little. So that And you was came for hospitation or you came for language FSP course? FSP course. So I didn't have any hospitation when I Okay, came to okay. Germany. I just came for language course, FSP course, and after I gave my FSP exam, then I directly applied for Stella. So that was the thing. The difficulties that I would say, first of all, was that lacking of guidance, proper guidance, and knowledge. And after that, the thing that I didn't know many people who came to Germany. Through the process, I met many people. I would also thank one of my good I friends. mean, I'm very, yeah, please. I would also thank one of my very good friend. We both did our journey together. He helped me a lot. We both helped each other. Like our FSP exam was also a week apart. Like he had that on 13th, I had on 19th. So just a gap of a week.
So yes, I made good friends there. So I started alone, but on the way I found people along, and now I have a community. That I think that would have been the case with you also. नहीं, दैट इज द सी व्हेन यू हैव कॉमन पर्पस देन वो कहावत है ना कि क्या लोग जुड़ते गए कारवा बनता गया Yes, टाइप्स दैट exactly. वो वैसा ही है व्हेन यू हैव अ कॉमन टारगेट कॉमन पर्पस तो लोग आते हैं बिकॉज आप जो भी कर रहे हो लाइफ में आप अकेले नहीं होते हो हम कोई ना कहीं वो कर रहा होता है या सोच रहा होता है एटलीस्ट करने का तो दैट इज द पॉइंट ऑफ नेटवर्किंग कि ना आप कैसे उन लोगों को आप साथ में लाओ and then do things together so definitely that helps and I'm very like glad that my videos my effort also helped you in your journey तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि ना जो मैं कर रहा हूँ जो वीडियोस बनाता हूँ मैं बिकॉज यू नो हाउ इट इज़ लाइक कितना एफर्ट लगता है अभी हम ये रिकॉर्डिंग करने से पहले देखा तुमने कि कितना एफर्ट लग रहा था उसमें तो बट स्टिल आई मीन इफ इट हेल्प्स देन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड ऑब्वियसली साथ में अभी हमारा कंसल्टिंग बिजनेस है सब कुछ भी है उसके तो दैट ऑल्सो हेल्प्स फॉर दैट लाइक रीजन तो आई मीन वेरी वेरी नाइस जर्मनी पहुंच गए उसके बाद लाइफ सेट है, सब सेट है उसके बाद. बट द सबसे डिफिकल्ट पार्ट आई वुड से वाज आफ्टर आई रीच्ड जर्मनी टिल एफएसपी एग्जाम. This period was the most tough. Like after reaching Germany is actually that's the point from where difficulties start, I would say, because at that point you have to search for an apartment. You are struggling with the language. You have to search for everything, like the German bureaucracy. You know that how it is, what they say about German bureaucracy. So that was actually the difficult part, the most difficult part, and the biggest difficulty I would say is that after investing so much time, so much energy, so much effort, so much money, you are standing before some exams, and then you are hearing what other people have to say about the exam, what other people got as their experiences, and there's this self doubt, and that's the thing that's actually problematic, because the exam is a practical exam. It's not MCQ type exam that you have to score this much and you'll pass. Unlike USMLE or PLAB or other exams, you don't know what case will come, you don't know what questions the examiner will ask, you don't know, and you just don't know, because under pressure language also suffers a little, I would say. It depends. Sometimes some people can speak better, some people they just black out. So that period I would say was the toughest. I was struggling with the weather, I was struggling with the language, I was struggling with bureaucracy. I was luckily not alone, but I know people who were alone here. And after that there was this exam, that this exam actually I've heard that a lot from many people, and I would also say that you will also agree to that, is actually the biggest mountain, like Mount Everest to a person before he appears for the exam. After that, he says that it was not that difficult or not that thing, but before the exam, it's actually Mount Everest. I think that you would also agree to that. I think that you would also agree to that. definitely definitely I agree to that and it is difficult. I totally agree to that. Thing is that when as they this proverb no when the going gets tough the tough gets going या उसका मतलब होता है कि आसान रास्ते में तो हर कोई बढ़ते रहता है Yes. आगे तो मजा कहाँ है फिर अब यू पास द एफएसपी एग्जाम और खुश हो तुम आई एम ऑल्सो हैप्पी विथ यू कि चलो अच्छा एक स्टेप फैमिली मस्ट बी वेरी हैप्पी दैट एक स्टेप आगे बढ़ा है तो अगर ये एग्जाम ऐसे ही होता कि ना चलो ठीक है घूम फिर के आ गए और 2 महीने जर्मनी में स्पेंड कर लिया एग्जाम दे दिया हो गए पास तो खुशी नहीं होती ना और दैट इज वन थिंग एंड मतलब जो मुझे ये जो एग्जाम इजी होता है ना तो फिर मुझे लगता है कि ना इसमें हमारा नुकसान है बिकॉज फिर सबके लिए इजी है वो सब कोई पास करेंगे जो चीज़ें आसान मैं कोई भी जो अब आई टेल यू इन अ सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थिंग या बिजनेस थिंग जो मैं कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेता हूँ या कुछ करता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ एंट्री बैरियर क्या है कि मैं ये कर रहा हूँ कल को दूसरा भी कर सकता है तो मैं
मैं ऐसा काम अगर मान लीजिए इसमें ये वीडियो बनाना या कंसल्टिंग कंपनी जो भी है, ये हर कोई कर सकता है। ठीक है, इट्स सिंपल। वीडियो बनाने हैं 2 साल 4 साल और फिर आपको, तो इसलिए ये मैं करता हूँ बिकॉज इट्स इजी, बिकॉज इजीली विथ हो जाता है। बट दिस इज नॉट द एंड गोल। तो आपका जो मैंने एग्जांपल पता नहीं हाउ इट मैच टू द क्वेश्चन, बट व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट जिस चीज़ में एंट्री बैरियर बहुत कम होगा, बहुत इजी होगा, उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग इट। Exactly, I would also agree to this point. The language, what you have learned in English in all these years, to be able to converse and convey all of that in German, that's exactly, people don't think that. Some people used to say that it's just a language, you can learn a language. But yes, you can. I won't say that I have done that. Many people have done that. Yes, you can. Obviously, you can. But many people have done MBBS also. That doesn't mean that MBBS is easy. हाँ, नहीं, दैट इज आई डिड नॉट मीन दैट, आई एम सेइंग दैट इट्स, लेकिन इट्स डिफिकल्ट। लेकिन जब एमबीबीएस पास हुए, इतना मजा आया ना कि उसके फोटोज आदमी ने कॉन्वोकेशन के फोटोज फेसबुक पे लगाए और सेटोस्कोप के फोटो लगाए कि यू हैव अर्नड इट, यू हैव दैट फीलिंग दैट यू हैव सेंस ऑफ अचीवमेंट है, यू हैव अचीव्ड समथिंग। ठीक है, वो 2 साल बाद मालूम पड़ता है कि अच्छा उससे कुछ हुआ नहीं एमबीबीएस के फोटो लगाने से, बिकॉज अब तो बेरोजगार है, अभी 50,000 की नौकरी मिल रही है मेडिकल ऑफिसर की। तो दैट वो 2 साल बाद पता चलता है। ये मुझे लगता है जब मैं फेसबुक पे देखता हूँ बहुत सारे जूनियर्स, जब बहुत जूनियर होंगे वो, लाइक एमबीबीएस होने के बाद में फोटोज लगाते थे, हम लाइक यार अच्छा रुको साल भर रुको, मालूम पड़ेगा तुमको कि हाउ द मार्केट इज एंड नॉट थिंग्स आर, बट देन फॉर दैट मोमेंट दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे हैव अचीव्ड समथिंग। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, आई मीन मेरे को तो आई फाइंड इट्स गुड। थोड़ा चीज़ डिफिकल्ट होना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए उसके लिए, और आपने अचीव करना चाहिए वो चीज़। Yeah, that gives you purpose in life. To this point also, I also questioned myself. Many people have questioned me. I also questioned myself, and I think that at some point you also would have asked this question to yourself: is it worth it? So much effort, so much struggle, is it worth it? So what I actually realized is actually are the pros that residency in Germany give. First of all, I would say the pay. Like you made a few weeks ago a video about the salary of a first year resident, the basic starting salary of a resident in Germany. That would be from March 2024, that would be around 80,000 per year, 80,000 euros per year. So I don't think that any other country can match that. Alone US, people want to go to US. That's around 48,000 dollars per year or something like that. So and given the inflation in US and comparison to Germany, I think that's basically nothing in comparison to Germany. Obviously, as attending, you earn much better, but in Germany also that depends upon where you are working, what are your skill set, and what profit you can bring to the hospital. So that's similar to US. What are your views about this? See, salary wise, as a residence salary, German salaries are quite higher comparison to other countries in the world. So resident salary, but the difference is post residency. After Fakats or as a Oberarzt, then only few countries in the world are better. Like there are few countries that are better. US is better first of all. Uh, Australia also pays better. Um, Middle East countries they pay better. So ये कुछ countries they pay better. Otherwise, UK does not pay better. UK is similar to what is Germany. In fact, consultants की salary वहाँ पे तो कम ही है. After I passed my FACAS, I got myself registered in the UK's General Medical Council as a specialist orthopedic surgeon. एंड मैंने वो पहले किया, उसके बाद फिर मैंने रिसर्च बाद में शुरू किया मैंने उसका कि अच्छा नाउ इफ आई हैव द लाइसेंस नाउ आई कैन अप्लाई टू द हॉस्पिटल्स एंड गेट सम पोजीशन समथिंग। थोड़ा रिसर्च करने के लिए मैंने किया वो। देन आई गॉट टू नो, आई टॉक टू सेवरल पीपल ओवर देयर एंड देन दे टोल्ड मी द सैलरी स्केल। देन आई स्टॉप्ड लाइक ठीक है अब नहीं करना फिर ये, बिकॉज देन what they make as a consultant over there, that I was earning in my fifth year itself here. Okay, so why would I, after being consultant, why would I go to a lower sales pay scale?
Okay, तो वो था, तो few countries are there which do better after residency, but during residency, those 6-7 years जो भी आप residency करोगे, तो उसमें Germany pays quite well, मतलब comparison to other countries. Also, a question of mine that I have done a little research over it, but I think that you have much more knowledge about this thing. Like I have seen also this, and I know also that that is possible. Many people, like first of all, other countries after FACAs, US or Australia for that matter, Canada, and European countries like Switzerland or Amsterdam or Luxembourg. So obviously we know that to go to Switzerland you can directly go, and the pay for overarts and chef arts is also higher in comparison to Germany. And for USMLE, what I searched that US, I mean, if you have cleared USMLE, then you can directly apply for the attending positions there. So what is the actual situation regarding these matters? See, about Switzerland, your information is correct that you can, after FACATS here, you can get it recognized and you can directly work over there. So, and the salary scale is also three times, approximately three times compared to what you earn in Germany. Expenses are also more, but then it's, I mean, three times expense, three times income. That means three times saving. Like you can calculate roughly like that. So Exactly. that way is. That's exactly what I thought when I came to Germany. Like Hmm, people used to say that you are earning more, that you have to expend also more. Then hmm. I thought that the savings are also that Yeah, the much percentage is the more. same. No? Yeah, yeah. So that is how, because whenever you say anyone no, that there's high salary in Switzerland, the next answer would be, but the expense is also high. Yeah, obviously. I mean, expense is also high, but then that means the ratio, if the ratio remains same, still you have more savings over there. So that is about Switzerland. But Switzerland, I mean, it's there are many people moving to Switzerland. I don't plan to, but there are many people moving to Switzerland because they say that work environment is better, salary is better, the weather is like the scenery and the living lifestyle is better over there. So might be. I have not much researched much more about Switzerland because I don't intend to move over there. Um, that is one. Because the important part in Switzerland is that German is spoken in Switzerland in German parts. So uh, there you can find a position. If you go to different parts, then you need to learn another language. Okay, maybe French or maybe other neighboring like countries' language. But German in German parts you can work. That's one thing. About countries like Holland, for example, you said Amsterdam. So Holland, you need to learn Dutch. That's a separate language altogether. You want to go to US, you cannot directly go become an attending over there. You need to be board certified. Now, board certified means person who has done his residency from US. Okay, so you can, but you can still work as a non-board certified doctor. Okay, so now non-board certified, you will have to first do your fellowships over there to get some credibility to know the US system to work. So maybe a couple of years fellowships you will do there. Fellowships are paid again, they're paid less. Okay, so they are paid like residents, like a little bit more than residents, but like residents. So it's not a attending position. So after 2 years or maybe fellowships or maybe 1 year of fellowship, you will get a attending position, hopefully in some remote place, not in some big place, because you are not board certified. You're non-board certified. You cannot work. You private patients will not come to you because you're non-board certified. Your credibility is at stake all the time over there because you're non-board certified. So that is why that problem is there, that after clearing a USMLE, getting fellowships, still you cannot become board certified. You can become board certificate, but there is a certified, but there is a long way to it. So you have to do multiple fellowships and you have to apply and all. It's a um, there's no direct way. You cannot just apply for certification, you'll get the certificate. It's not like that. You have to do multiple fellowships, contact them, tell them, then somebody should vouch on your behalf that he's good and he should get certification. And then that way you build contacts and all, then you become. Okay. So it's a long way in the US. Uh, about Australia, I don't know if German Fakulty is directly recognized. I'm not sure about that. But Australia, one can go. But again, in Australia also, you will be sent again to the areas of need.
Okay, so you will be working not directly in, see, there are three cities or four cities, big cities there. Otherwise, rest is desert only. So if you Google, or there are forums where Australian doctors or migrant doctors who have gone to Australia, they've shared their stories that how the work life is over there and how the total atmosphere is. So from what I read, it was not very positive. Obviously, Australia is a good country. There are, if you get position at some big Melbourne, Sydney, Perth, then fine, you'll have a good life over there, good salary also. Salary is good. Um, Other option is about going to Middle East. Now that is, many people are considering that going to Middle East, Dubai, for example, Abu Dhabi, where the salary is quite high, and I mean, the work life is also quite good. So that is one good option, one consideration. Going to UK at present does not make sense because, as we all read and hear in the news, NHS is in chaos, and it's not a very nice place to be at present as a medical professional. All the UK doctors are becoming YouTubers nowadays. So yeah. So these are the few countries, which few options, and that is what I think about these options. For me, my plan is at present I'm staying here only, um, because important is that when you go to a new country, you have to again start everything from scratch. You have to build your credibility, your reputation, everything. Okay, and you have to work very hard initially also. And when somebody is paying you, then you will not be working just 40 hours a week. You'll be working more. So in my personal view, my thought is that if I'm going to work as an employee, then in some other country, harder than this, for more money, I could rather use that time for something else and build my something own of my own, and not be a complete employee all the time. If I go to say UK, or maybe if I go to Dubai and they pay me two times my salary, and then they make me work say 60 hours a week or 80 hours a week, I'm working in the hospital all the time. Then I don't have any time for any YouTube. I don't have any time for any extra projects that I do, that you must have seen on Facebook and Instagram. So I will not have time for any of those things. So then I will be full day working. That, in my personal view, it's not suitable for me, basically, for my mindset. So there might be people who would be very happy with that. So it's very individual. Yeah. Um. Yeah. I've Again, seen we have. many videos. Yeah. Sorry. Go again. Come again. Yeah, I've seen many videos, and most of many people also say that if you start investing at the right time, from the beginning of your residency, then till the end of your residency, you are actually getting passive income equivalent to the salary of a chef arts. And then that's your choice. How do you want to work, or if you want to work or not? Because Um. at that time, like if someone says that the salary of attending in US is better, obviously they are much better because system is like that. In US, doctors are happy. In Germany, patients are happy. So Yeah. that's Yeah. the thing. But Yeah. how should the person be investing to make passive income better? Um. Shall we make a new video because it's 6 minutes there, or yeah, but 6 minutes also I can speak. I'll edit this part. Okay. See, whenever I hear word passive income, first of all, it always comes with a disclaimer that it's not passive income. Nothing is passive. Okay, some work has to be done for that. What they mostly imply when people use the word passive income, what they imply is that you do work once and you reap the benefits later. So you work very hard once and then you reap the benefits later. One example that I did, like from me, what it is that I built a online video course. Okay, in 2020, when there was Corona time, I had 1 week urlaub, vacation. In that 1 week, I built a video course where I recorded all the materials, like all the journey about PG in Germany, all the details I recorded, and I made it into a course. Okay, and that course has been selling. Initially, I sold it when it was not like ready. It was selling at discounted price. After it got ready, it is selling at the full price.
Okay, so now at present, if anybody wants to learn about PG in Germany, about the pathway, about the websites, the links, all the details, every how to prepare for interview, how to apply for visa, all the details is there in that course. Okay, I also update it all like yearly. So that course was made 3 years back. But if now somebody buys that course, I get the money for that. So now it has become passive income for me. But that time it was not passive. It has work has been put in that and very intensively. Okay. So if you build something, well, coming to your point, this is a example of passive income that I wanted to clarify that point. Passive income. Coming to your point, uh, investment will make you rich in 60 years because if you say depending upon what instruments you use, and now this is not investment advice, like none of us are investment professionals, right? So we are like simple doctors who were never taught anything about investments in our college. So we have to learn things from outside, but still, I mean, since we're having this conversation, uh, investment, you'll get you in Germany maximum, if you're very intelligent, you will earn 8% to 10% on your investments. I'm talking about the mutual funds, the ETFs, and your stocks. Okay, nothing more. I mean, normal is around 14-15%, but for that you have to be very patient and very intelligent. Like you have to have experience. But normal 8%, 10% people can earn. But 8%, 10%, how is it going to make you rich? Because if you say you invest say, 1,000 euro monthly, in 1 year you invest 12,000 euro, and 10% for simplicity's sake, if we take 10%, so it will become how much? 1,200, euros, right? So that you will earn in 1 year on your 12,000. That means next year you will become 13,200, and then the compounding will take place. So in 6 years, how much you will earn? It will not be too much. In 6 years, maybe your amount is like say maybe double, like from like you can earn not 100%, but you can calculate. It will not be very much. Okay. What is important, since the concept of investing and starting early is very important, that I totally agree, because there are many videos on YouTube there where they show that difference between somebody who started investing say 100 euros at 25 years of age and somebody who started investing that same amount at 35 years of age. Okay, and what is the total difference of total lump sum at the end of say 60 years, 65 years? There is a huge difference, because the compounding had the chance to work on your money for the person who started early. So that I'm totally 100% sure that one should like start investing as soon as one gets money, extra money. But you cannot depend on that. What you can do is that this is all about investing into financial instruments like stock exchange and mutual fund and ETFs. There is another way people go about real estate. Okay. So I have some experience in all of these branches. Like I have been doing this since I can just give you some ideas. Real estate is one good option. Depends upon market to market. At present market is good, but people are scared. Okay, so it's basically it's a good place to be. Basically, if you have money, you should invest it right now because the interests are high. The banks are choosy between whom to give. Uh, so, so the property rates are falling. But in general, since last 10 years, it was always increasing. The property rates were increasing because interest were cheap and everybody was buying some things. So if you can build a few properties where like build means buy a few properties with bank finance and rent it and get enough rent. So that way you can make yourself like financially independent where you get enough rent from the like properties together to cover your monthly expenses. Now that is easier said than done because when you take properties, it has to have you'll have to pay the bank also, no? You'll have to pay the bank. So you need to have that surplus amount. So at least if you want say 3,000 euro per month, okay, I'm just giving a rough example. Then and if you can generate only 200 euros cash like plus in your bank from your like after giving the bank 200 euro positive cash flow, then you'll need 15 such properties for 3,000 a month.
So you need to buy 15 properties for that. So in 6 years that you will earn a Shefat's salary, I don't know what calculation. If you know that calculation, then I would be happy to hear that. So another thing that I wanted to ask you that I've seen मैंने बहुत से जब से मैं जर्मनी आया हूँ काफी इंडियन डॉक्टर से मिला तो काफी उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फाकार्ड्स कर ली है या फिर लास्ट ईयर में फिफ्थ या सिक्स्थ ईयर में है और they have just stopped working in the normal system and they are working as honorar arts or the locum system that you say and we know that how much a doctor when working as an honorar as how much he earns per month like Yeah. around uh, 20,000 euros per यस, month or something अराउंड like 70 that. to 20,000 वो उनका इनकम हो जाता है. देखो, यस, दैट इज ऑप्शन, एन अपॉर्चुनिटी दैट वन कैन यूज. यूके में भी बहुत लोग करते हैं. यूके में इट्स अ नॉर्म, लाइक एवरीबडी डज दैट. यहाँ पे नॉट एवरीबडी डज दैट. आई मीन देयर आर पीपल हु डोंट डू इट. मैंने आज तक कोई लोकम जॉब नहीं किया है. नॉट बिकॉज करना नहीं, बिकॉज ठीक है नहीं किया, मौका नहीं आया कभी करने का. Because I was busy with my own hospital things only. But I also know many people who do that regularly, or it's a one way of like generating an extra income. तो कर सकते हैं लोग इसमें. दे अर्न अराउंड 95 यूरो टू 100 यूरो पर आवर ऑफ वर्किंग. एंड उसमें देर आर प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट सैलरी इज 20,000 ना, तो दैट काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गया सैलरी. वो तो प्रोज वो हो गए. एक सेकंड प्रो होता है कि ना यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप एक हफ्ते काम करो और 3 हफ्ते आराम करो. या फिर यू डू लाइक से 5 ड्यूटीज इन अ मंथ, और 5 ड्यूटीज इन अ मंथ से, या 4 ड्यूटीज इन अ मंथ. एंड इन द 4 ड्यूटीज एंटायर मंथ का जो सैलरी आपको यूजुअली आता है आपके हॉस्पिटल, दैट इज कवर्ड. तो बाकी टाइम या तो आप अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर यू डूइंग समथिंग एल्स लाइक. तो वो है, अपना चॉइस है. या फिर कुछ होते हैं जो कंटिन्यू पूरे महीने ही करते हैं ऑनर ड्यूटी, एंड देन दे अर्न दैट 20,000 यूरो पर मंथ वाला सैलरी सिस्टम. सो ये है प्रोज इसके. फ्लेक्सिबिलिटी है. यू आर नॉट अंडर दैट हायरार्की कि ना इसने ये बोला पॉलिटिक्स आपके इसमें नहीं होती, बिकॉज आप एक दिन आते हो फिर चले जाते हो. शाम को आए, किसी को पता भी नहीं चला कि आप कौन हो. मतलब आपने आए, ड्यूटी किया और अगले दिन गायब. तो लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेस वो जो स्कट वर्क होता है ना, जो कचरा काम जो सबको करना होता है, वो आपको नहीं करना होता, बिकॉज आप तो जा चुके हो तब तक. तो जो अगला आएगा वो करेगा. तो दोज आर द बेनिफिट्स. नाउ कॉन्स में क्या आता है इसमें, कि आपका एक फेस्ट आर्बाइट्सप्लाट्स नहीं है. तो सर्जिकल ब्रांच में स्पेशली अगर आपको ऑपरेशन करने हैं, देन आप लोकम सिस्टम नहीं कर सकते. बिकॉज कोई कहीं से भी आप लोकम करने जाओगे, तो वो आपको नोट ऑफ नाम इमरजेंसी में बिठाएगा. वो आपको ऑपरेट करने नहीं देगा, बिकॉज दे डोंट नो यू. तो यू कैन नॉट सडनली बिकम ऑपरेटर सर्जन ओवर देयर, राइट. तो आप करोगे क्या, तो आप वो पेशेंट देखोगे, फ्रैक्चर देखोगे, उसको आप बैंडेज लगाया, गिप्स लगाया, वो सब वो काम आप बेसिकली नोट ऑफ इमरजेंसी का काम करोगे आप. वो करोगे. एक काम कौन ये हुआ कि उसमें ना आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं होता है. कोई आपको जानता नहीं है, तो नो बडी नोज योर स्किल्स. इवन दो यू माइट बी वेरी स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड सर्जन, आप ऐसे लोकम जाओगे तो फिर यू दे विल ऑलवेज कीप आई ऑन यू कि क्या कर रहे हो, कि ना, बिकॉज दे डोंट नो यू, कि दे डोंट नो योर स्किल्स एंड योर नॉलेज इन एवरीथिंग. वो एक कौन है. सेकंड कौन उसमें ये होता है कि आपका एक फिक्स फेस्ट आर्पाइट के बाद बेसिकली वही कि ना ट्रेनिंग के लिए इट्स वेरी बैड. और ट्रेनिंग के बाद भी सर्जरी में ऐसा होता है ना कि अगर आप इफ यू डोंट ऑपरेट फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर, देन यू लूज दैट स्किल स्टफ, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. सर्जरी इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. तो उनके लिए इट्स नॉट अ वेरी गुड लाइक डिसीजन, जिनको सर्जिकल करियर परस्यू करना है. जिनको सर्जिकल करियर नहीं परस्यू करना है, उनके लिए इट्स अ गुड थिंग, वो कर सकते हैं. इट्स लाइक काफ़ी पॉजिटिव्स हैं उसमें. एक और कौन है जो बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, कि ट्रैवलिंग. Because it might happen that your one job is 200 kilometers away, that you did and come back for one night, one day, maybe, and then the next job that you have is another 200 kilometer in another opposite direction. So you are traveling from one place to another. तो वो ना आपको जो पीस ऑफ माइंड नहीं रहता कि ना मैं सुबह उठ के हॉस्पिटल जाऊंगा, वहां से आऊंगा, ऐसे नहीं. आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, ऐसे. यू स्टे इन होटल ओवर देयर, तो यू आर अर्निंग वेल. बट देन उस टाइम के लिए थोड़ा हेक्टिक भी हो सकता है. तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइक प्रेफरेंसेस. तो बहुत सारे लोग करते हैं, कर सकते हैं, वन कैन ट्राई. तो मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं. आई एम लाइक देयर यू आर ऑल्सो लाइक यू अर्निंग हाई, ठीक है, बट यू आर स्टिल सेलिंग योर टाइम.
you're selling at a higher price, right? So time is a very important asset for me. So that's why I'm very what you say कंजूस हूँ मैं टाइम को लेके, मैं टाइम ना ऐसे वो नहीं करना चाहता, मैं दे नहीं I would देता हूँ say टाइम। peculiar. Like पिक्यूलियर, हाँ, तो you मेरे को don't टाइम का you बहुत you वो है know कि that where to invest your time, not just like you will be earning 100 120 euros for 1 hour, but what will that bring you in next 10 years or 30 years? एग्जैक्टली exactly, उसका क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव एडिशन नहीं होता उसके अंदर। अगर मैं अपने हॉस्पिटल में 6 महीने काम करता हूँ, 1 साल काम करता हूँ, हर दिन वहाँ काम करता हूँ, कोई स्किल सीखता हूँ, लोग मेरे को 1 साल जानते हैं वहाँ पे, तो 1 साल के बाद ना दे विल हैव ए ओपिनियन अबाउट मी, दे विल नो मी, दे विल आई विल हैव लर्न सम स्किल, आई विल हैव नोन देम। तो मैंने कुछ तो वहाँ पे गेन किया होगा 1 साल में, ठीक है। और जो मैंने सीखा वहाँ पे 1 साल में, मे बी मैं अपने फ्यूचर में करियर में इसको यूज़ करूंगा। तो इट इज़ नॉट वो, वहाँ पे आई विल बी अर्निंग 35 यूरो पर आवर, ठीक है। तो ठीक है, खर्चा चल जाएगा उसमें भी, लेकिन आप 100 आवर्स कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ गेन आपका नहीं हो रहा है, बस आपसे जा रहा है। You are losing that opportunity to learn, you are using that opportunity losing that opportunity to build a reputation, you are using that opportunity to learn from, मतलब तो क्यूमुलेटिव कुछ अक्यूमुलेट नहीं हो रहा वहाँ पे, आपका बस पैसा अक्यूमुलेट हो रहा है। एंड पैसा जो है वो उतना हम वैल्यू करते हैं, होना भी चाहिए वैल्यू पैसे का, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो मेरा मेरा फोकस होता है नॉट ऑन मनी एक्यूमुलेशन, मेरा होता है वैल्यू एक्यूमुलेशन पे। वैल्यू, आप चीज़ों में वैल्यू लाओ, आप जो कर रहे हो ना, आपका चीज़ मोर वैल्यूएबल होना चाहिए अदर पर्सन से। तो दैट इज माय माइंडसेट बेसिकली। तो ना इट्स ये जनरलाइज हर किसी के लिए नहीं है ये। देयर आर मेनी पीपल वो हैप्पी डूइंग लोकम जॉब्स एंड आई एम हैप्पी फॉर देम, बट मेरे लिए नहीं है वो। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे लाइक व्हेन वी मीट पीपल एंड जब वो अपने सैलरीज डिस्क्लोज करते हैं, एंड मेरी वाइफ मुझे बताती है कि देखो ये तो, आई मीन, कर तो हम भी सकते हैं, लाइक मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वही होता है कि ना दैट इज अगेंस्ट माई लाइक प्रिंसिपल। तो मैं तो एक जॉब तो कर ही रहा हूँ ना जहाँ पे आई एम सेलिंग माई टाइम, तो मैं हर और बाकी टाइम भी क्यों बेच दूँ, जितना है उतना। Exactly. I understand this point. Like if you want to operate as a surgeon, हम्म। so and if you want to become chef at some time, so obviously you'll have to suffer at this moment. यस यस यस। And another thing that I wanted to ask is about note arts. So you हम्म। have also done this thing. So यस। how important do you think is note arts, and what are then pros and cons for note arts? And या, नोटाट्स आई डू वेरी ग्लैडली। नोटाट्स में करता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मनी। नोटाट्स में, first of all, what is the job of a note arts? That also I want to okay, know. so notarzt as a German words, note is emergency, and arts is a doctor, the emergency doctor. Now this should not be confused with the emergency medicine residency in different countries. ओके, सो ऐसा नहीं है यहाँ पे। नोटार्ट्स जो है एवरीबडी कैन डू, ऑल डॉक्टर्स विथ 2 years of experience and then special training, notarts training. Then there are also exams for that. So there is one course, 80 hours का कोर्स होता है नोटार्ट्स ट्रेनिंग का। उसके बाद में आपको 50 हॉस्पिटेशन करने होते हैं, 50 आइनजेट्स आपको, मतलब एक्सपीरियंस नोटार्ट्स के साथ आपको जाके देखना होता है 50 बार कि कोई केसेस में से कैसे किए हैं, कि मतलब हाउ डिड ही हैंडल इट। तो 50 आपको केस ऐसे करने होते हैं। उसके बाद यू हैव मस्ट हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ योर लाइक वर्क एक्सपीरियंस, जर्मनी में क्लिनिकल सेटिंग का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 years का, दैट। उसके बाद आपको एग्जाम देनी है। तो एग्जाम एस्टर ग्रामर में एग्जाम होती है, 3 लोग बैठते हैं उसकी, और तो फाकाच टाइप की एग्जाम होती है। तो आफ्टर डूइंग ऑल दैट थिंग यू गेट द टाइटल ऑफ नोटार्ट्स, ठीक है। तो ये है एग्जाम के रेगुलेशन के बारे में कि इसके बाद आपको नोटार्ट्स मिलता है टाइटल। नोटार्ट्स करने के टाइटल मिलने के बाद में यू कैन वर्क एज नोटार्ट्स। तो नोटार्ट्स का काम ये होता है कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, इट माइट बी सर्जिकल, इट माइट बी मेडिकल, मेडिकल इमरजेंसी को बाहर से हॉस्पिटल तक पहुंचाना, पॉसिबल इन अ लिविंग कंडीशन, लाइक पॉसिबल इफ पॉसिबल इन लिविंग कंडीशन, तो दैट इज द वर्क ऑफ नोटार्ट्स। दैट मीन्स वन कैन बी, उसमें आपके पास आप पूरे टाइम नोटार्ट्स ड्यूटी में वो जैकेट वगैरह पहन के, वो येलो और रेड वाले जैकेट्स पहन के, आप पेजर आपके पास रहता है जेब में, और आप हमेशा जूते पहन के, मैं मेरी ड्यूटी होती है, मैं 24 घंटे, 24 घंटे तो नहीं, जब मैं सोता हूँ तब नहीं, लेकिन अदरवाइज मैं जूते पहन के ही रहता हूँ। बिकॉज जैसे पेजर बजेगा, वो पेजर आपको भागना है। आपको भागना है किस तरफ, तो आपकी गाड़ी है वहां पे, नोटार्ट्स वागन बोलते हैं उसको, नोटार्ट्स वागन की तरफ भागना है आपको।
आप भागोगे, और आपका जो ड्राइवर है, यू हैव अ ड्राइवर, तो वो नेफ फारर बोलते हैं उसको, तो वो भी भागेगा, आप दोनों भागोगे गाड़ी की तरफ, वो गाड़ी चलाएगा, आप दोनों बैठ के, और वो गाड़ी जो है जू जू चलाता है, ऐसे रेसिंग टाइप का ना, कि 30 जोन जो रहता है ना, उसमें वो 70-80 पे चला रहे होते हैं, और मतलब ऐसे थोड़ा डेंजरस होता है बट थ्रिलिंग भी होता है। तो वैसे में आप पहुंचते हो फिर, कि जो दो केस कुड बी, वो आपके पेजर में आ चुका रहता है क्या केस है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इफ इट इज आरसीएस जो कोरोनरी सिंड्रोम का केस है, या समबडी इज अनकॉन्शियस, या कोई पर्सन बिहाइंड द डोर है, दैट मीन्स देर इज वॉज समबडी बिहाइंड द डोर, जो कि फायरवेयर ने दरवाजा तोड़ा है अभी, और पता नहीं क्या, पता नहीं होता क्या केस आने वाला है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, और किसी का कोई गिर गया है, तो वो हल्का फुल्का आइडिया रहेगा, मोस्टली आपको पता नहीं रहता क्या होने वाला है वहाँ पे। तो आप पहुँचते हो वहाँ पे, एंड देन व्हेन यू रीच देयर, देन देर इज मोस्टली, एक रेटुंग्सवागन भी पहुंच चुका रहता है वहाँ पे, बड़ी एम्बुलेंस जिसमें पेशेंट को ले जा सकते हैं, वो एम्बुलेंस, हम आप तो जाते हो छोटी गाड़ी में, वो Right, right, आता है right. बड़ी गाड़ी, रेटुंगस्टीन्स, तो उसमें भी 2 लोग रहते हैं। तो बेसिकली देन यू आर अ टीम ऑफ 4 पीपल, ठीक है, यू आर फ्रॉम दिस 4 पीपल ओनली यू आर द मेडिकल पर्सन। बाकी लोग जो हैं दे आर फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो दे आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल्स, दे कैन डील विद मेनी अदर थिंग्स, बट नॉट विद मेडिकल, मेडिकल डिसीजन आपका होता है, एंड यू आर दर मेडिकली योर बॉस वहाँ पे। वो आप उनको बोलो कि वो आप पे करेंगे, वो काम वो आपके लिए हेल्प करेंगे आपको। तो ये होता है, और वहाँ पे उसको मेडिसिन देना, ट्रीटमेंट करना, जो भी है वहाँ पे होना चाहिए, वो करके एम्बुलेंस में लाके, इमरजेंसी में ब्लू लाइट के साथ में हॉस्पिटल तक पहुंचाना, दैट इज योर जॉब बेसिकली। सो इट इज़ क्वाइट स्ट्रेसफुल, इट इज़ क्वाइट स्ट्रेसफुल। इसमें मतलब ऐसे 50% नहीं होता स्ट्रेसफुल, 50% में तो क्या ठीक है नॉर्मल, लेकिन उसमें ऐसा होता है कभी भी बिगड़ सकता है केस। यू कैन स्टार्ट विथ अ नॉर्मल, कि हाँ ठीक है, कूल है पेशेंट, लाइक जेटीगोंग जो है, SpO2 सैचुरेशन है 95%, कोई नहीं, बिठा दिया उसको आराम से, और वो 15 मिनट के अंदर वो सैचुरेशन जो 70 हो रहा है उसका, ही कैन हैव एनीथिंग, कैन हैव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ही कैन हैव हार्ट इन्फार्क्ट, जो हार्ट अटैक। आपको प्री हॉस्पिटल आपको पता नहीं है, यू डोंट हैव ड्रॉप, यू हैव ईसीजी, ईसीजी पे आप देख के पता कर सकते हो, लेकिन आप लंगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, उसका आपको पता ही नहीं है। बाहर आप किसी को ब्रेन ब्लीड है मान लो, तो यू आर इन रोड पे हो आप, आपको कैसे पता चलेगा न्यूमोथोरैक्स है किसी को, तो आप रोड पे हो, कैसे मालूम पड़ेगा आपको, एक्सरे तो किया नहीं है आपने। तो आपको उस केस में, वेर यू डोंट हैव मच डायग्नोस्टिक टूल्स, वो आपके स्किल, क्लिनिकल स्किल्स जो है आपके ऊपर, उस पे, और एक एक ना ओपन माइंडेडनेस, गेस वर्क, आपको गेस वर्क करना होता सारा वहाँ पे, और वो गेस वर्क करके उस हिसाब से पेशेंट को इलाज करके लेके आओ हॉस्पिटल तक, एंड हॉस्पिटल में सबको रिसोर्सेज हैं ही, तो वो फिर आगे मैनेज करते हैं। तो या मीन दैट्स व्हाई ये जो है ना, आई सेड आई डू इट वेरी ग्लैडली, बिकॉज ये जो थ्रिल आता है, अदरवाइज हमारा फील्ड जो है ना ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा का, वो थोड़ा सा ड्राई फील्ड है। उसमें हमको कोई मतलब नहीं होता कि लंग का टाइडल वॉल्यूम कितना है, तो हार्ट फ्रीक्वेंसी कैसी चल रही है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बोन्स है जोड़ना है, ठीक है, या जॉइंट है, देर इज आर्थरोज, आर्थराइटिस है, उसको रिप्लेस करना है, तो उसका भी अपना चार्म है, बट वो थोड़ा ड्राई है, वो रिपीटेटिव हो जाता है। यहाँ पे एवरी केस इज डिफरेंट। यहाँ पे 1 साल का बच्चा होगा, 2 साल का बच्चा होगा, वो बोल भी नहीं सकता आपसे, एंड पेरेंट्स जो हैं घबराए हुए हैं कि हमारा बच्चा जो है मोर स्लीपी है, इज स्लीपियर देन यूजुअल, उसके लिए उन्होंने बुला लिया नोटार्स। तो अब यू डोंट नो, यू आर नॉट अ पीडियाट्रिशियन, आपको नहीं पता कि बच्चा कितना स्लीपी होना चाहिए, इफ यू हैव योर ओन चाइल्ड देन इट्स डिफरेंट, देन यू नो, अदरवाइज आपको नहीं पता होता है। तो उसमें आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि इसको क्या हो सकता है, इसका आइस कैसा है, इसका टर्गर कैसा है, स्किन का डिहाइड्रेट लग रहा है क्या चाइल्ड, तो आप उसको मतलब यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, तो वो एक थोड़ा सा नाइस चेंज ऑफ पेस हो जाता है, दैट इज व्हाई आई आई लाइक दैट। तो वही है अबाउट, एज अ सेड, वो भी लोग नोटर ऑनरर आर्ट्स उसमें भी होता है, उसमें भी आप कर सकते हो एज ऑनरर आर्ट्स, यू कैन वर्क, यू कैन अर्न लाइक द नॉर्मल 95 to 100 euros पर आवर, हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हो। तो बट या सो, बट दैट शुड नॉट बी द रीजन, एज आई सेड, कि वहाँ पे भी इफेक्टिवली टाइम ही दे रहे हो ना, बट वहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले रहे हो उस टाइम। Oh, sounds very interesting. I had interest in Notarzt from the beginning, but as you have explained it so good, I would definitely want to do that. नहीं, इट इज So इंटरेस्टिंग, बाद में ना, I बाद में think व्हेन यू most बिकम of लिटिल ओल्डर ना, देन यू विल नॉट वांट टू डू इट, बिकॉज इट एज अ सेट स्ट्रेसफुल होता है ना, तो बाद में यू विल फील कि ये क्या है, फालतू काम है ना। तो मतलब ऐसे, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट 50% केसेस जो होते हैं ना, 60% आप बोलोगे कि ना, उसमें इट इज मोर लाइक द पेशेंट और द रिलेटिव्स वर
over what scared and then they call the notards. Actually notards are not needed. ऐसे होते 50% केसेस, उसमें आपको लगता है कि क्या है, मतलब आप टैक्सी हो क्या कि ना, आप कुछ भी हुआ तो नोटार्स बुला लिया तुरंत। तो बट देन इन रियल 30-40% केसेस देयर एक्चुअली यू आर नीडेड। तो और उसमें ना वो जब आप करते हो, मान लो एक बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, एंड मैंने उस पे एक्चुअली आई क्रिएटेड अ वीडियो ऑन दैट डे, ऑन दैट ड्यूटी से मैंने वीडियो बनाया था, बिकॉज मेरे लिए ना बहुत एक वो एक मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन था वो, कि ना हम लोग हमेशा गाली देते हैं कि ना अरे इतना काम करना पड़ता है मेडिकल फील्ड में, हम तो यूट्यूबर होते, हम तो इंस्टाग्रामर होते, तो ऐसे पैसे छापते और चिल लाइफ जीते, ऐसे बड़े बड़े प्लेन्स में घूमते। इंजीनियर। हाँ, तो हाँ इंजीनियर होते तो वर्क फ्रॉम होम करते ना, मतलब ऐसे 8 बजे मीटिंग है तो पौने 8 बजे उठ जाओ और कैमरा के सामने मुंह धो के बैठ जाओ और ठीक है फाइन है। तो लेकिन हम लोग, लेकिन देर आर सर्टन मोमेंट, सर्टन इंसिडेंट्स जिसपे आपको ना ऐसे लगता है कि अच्छा नहीं, अच्छा काम कर रहे हो आप, यू हैव अ पर्पस। आप जो कर रहे हो ना उसका मीनिंग है, इट्स नॉट जस्ट आप एक्सेल शीट नहीं बना रहे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो खाली, आप जो कर रहे हो इट इज अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। मतलब उसमें ऐसा था कि देर वाज एक्सीडेंट, और वो मेरा एरिया भी नहीं था, वहाँ का नोट आज बिजी था, इसलिए मेरे को आया था कि जाना है वहाँ पे। मैंने देखा था कि 14 ईयर ओल्ड एक्सीडेंट, अब 15 मिनट दूर है, मेरा जो प्लेस है वहाँ से 15 मिनट दूर है हॉस्पिटल से। तो मुझे लगा और अनकॉन्शियस, ओके, नाउ द पर्सन इज अनकॉन्शियस 15 मिनट, तो या तो पर्सन विल बी डेड ऑलरेडी, ठीक है, या तो उठ चुका होगा अब तक ना, मतलब ऐसा पहले आया मिल्डूम के ना अनकॉन्शियस, लेकिन अब तक कॉन्शियसनेस आ चुकी होगी। तो मैं थोड़ा ऐसे कूल था कि देखते हैं क्या है। जब तक मैं पहुंचा वहां पे तो वो इट्स अ बिग मॉल एरिया, इन एसेंस बड़ा एरिया है वो। तो वहां पे देखा मैं पूरा पूरा ना रो बैरिकेडिंग है, वो फायरवेयर की गाड़ी खड़ी है और पुलिस की वैन्स खड़ी है बहुत सारी, सब सायरन बज रहा है हर जगह, पूरा ब्लॉक। अब मैं बोला यार ये तो थोड़ा सीरियस मामला लग रहा है कि ना अब ये क्या है। तो देन व्हेन आई वेंट ओवर देयर, so even though you're scared, you're not scared. Basically, you are like you're trying to get the feel of it कि हो क्या रहा है तुम्हारे आसपास ना, बिकॉज मैं भी कोई बहुत एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं भी 2 साल से कर रहा हूँ ये। तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, जैसे श्वेरी के सिचुएशन जो था ना, डिफिकल्ट सिचुएशंस में पहुंचते से समझने में कि और सब कुछ यू हैव टू अंडरस्टैंड, सब कुछ जर्मन लैंग्वेज में हो रहा है यहाँ पे। तो वो एग्जैक्टली। बैरियर जो है, वो जो दैट बैरियर दैट लोग जो सेज बोल रहे हैं, जो ऑलवेज। तो जो नोटफॉल में जो सामने वाला बोल रहा है वो ये कंसिडर करके नहीं बोल रहा है कि ना फॉरेनर है तो इसको स्लो बोलते हैं, ऐसा नहीं कर रहा, वो नॉर्मल बोल रहा है, तेज बोल रहा है, वो आपका काम है आपको समझना है सब कुछ वहां पे। ठीक है, तो फॉरएवर लोग वो मतलब वो लड़का जो था वो अनकॉन्शियस इतने टाइम से, फिर हमने उसको इंट्यूबेट करने का, हमने इतने लोग खड़े हैं वहाँ पे, उसकी मम्मी चिल्ला रही है वहाँ पे। तो ये हमने इंट्यूबेट तो करना है इसको, बिकॉज उसका GCS 8 था, ही वॉज नॉट मूविंग नथिंग ऑफ 10-15 मिनट्स, नाउ ब्रेन डैमेज वॉज ऑलरेडी लाइक श्योर कि ना इसको ब्रेन डैमेज तो हुआ ही होगा। बट अब रोड पे करोगे इंट्यूबेट तो 1,000 लोग देख रहे, पता नहीं कोई वीडियो भी बना रहा होगा वहाँ पे। तो हमने बोला कि नहीं, इसको हम लोग इमोबिलाइज करते हैं, इसको हम वागन में लेके जाते हैं, वहां पे इंट्यूबेट करूंगा मैं इसको। तो फिर लेके गए वहां पे, और इंट्यूबेट करते वक्त मतलब मैं नर्स को, वहां पे जो नर्स जो उसमें बोल ही रहा था कि ना यार तुम सक्शन क्यों नहीं रेडी है, तुम्हारा सक्शन रेडी करो, इंट्यूबेट करना है इसको। एंड जब तक मैंने इसको ऐसे बोला कि अगर इसने अभी वॉमिट किया ना तो हमको वी विल हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ऐसे मैं बोल ही रहा था एंड ही स्टार्टेड वॉमिटिंग दैट गाय। तो अब लगे यार, और उसमें ना पूरा वॉमिटस, उसने बस खाना खाया था तो तुरंत ही, तो आफ्टरनून का टाइम था, पूरा वॉमिटस, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ आप ट्यूब डालोगे ना। तो एंड एवरी सेकेंड आप जो ट्यूब नहीं डाल रहे हो, वॉमिटस जो है उसके लंग्स में जा रहा है, तो एवरी टाइम ही एग्जैक्टली। इज ड्राउनिंग, एवरी अच्छा मिनट अच्छा। एवरी सेकेंड इज ड्राउनिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन योर हैंड्स। एंड उसके बाद वो डिफिकल्ट है, अल्टीमेटली फॉर्चुनेटली हो गया वो इंट्यूबेट। एंड उसके बाद 5-6 महीने बाद में मुझे एक कॉल आया, एक ओबर आर्ट्स का, उन्हीं क्लिनिक से, यहाँ से अनेस्थेसी से। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ क्यों आया, पर सेक्रेटेरिएट को कॉल आया हमारे, तो उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया। तो वो बोला कि नहीं, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे कि आपने जो पेशेंट लाया था 6 महीने पहले, वो फैमिली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी या थैंक यू बोलना चाहती थी, बिकॉज वो लड़का जो है आज जो है 6 महीने बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है रिहा में। काफ़ी टाइम उसका, इसका 3 बार ब्रेन सर्जरी हुआ, उसका ये हुआ वो हुआ, बहुत सारा लंबा चौड़ा उसका था। अल्टीमेटली ही हैज गॉन वॉकिंग ऑन हिज लेग्स टुडे। अब उसको फिजियोथेरेपी होना बाकी है, लेकिन ही हैज गॉन वॉकिंग टुडे। सो वी वांटेड टू टेल यू दिस। तो तो ये ना, आई एम थैंकफुल टू दैट डॉक्टर ऑल्सो कि ना उतना सोचा कि इसको इन्फॉर्म तो करते हैं,
बिकॉज उसको मालूम था कैसे डिफिकल्ट केस है, मैं बता दिया उनको कि सारा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था वहाँ शॉक रॉम में। तो उसने सोचा कि ना फीडबैक देते हैं, तो फीडबैक से क्या होता है, मोटिवेशन आता है। तो ना Exactly. तो व्हेन यू फील ना कि अरे कभी कभी ऐसा होता है कि ना 140 किलो का आदमी है, उसको हेड्स इन्फार्क्ट हो रहा है। अब उसको फोर्थ फ्लोर पे है, उसमें लिफ्ट नहीं है उस घर में। ठीक है। तो आप उस फोर्थ फ्लोर से आपको उसको नीचे लाना, अब अकेले नहीं हो, लेकिन आपके चार टीम के चार लोग जो है वो है। लेकिन अब 150 किलो का आदमी है या 140 केजी का आदमी है, उसको आप पकड़ के चार लोग नीचे ला रहे हो सीढ़ी पे, छोटी सीढ़ी पे जिसपे लिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपकी कमर की तो खुद ही बैंड बच जाती है। तो उसमें आप सोचते हो कि ये क्या काम करेगा, बोझा उठाने के लिए थोड़े डॉक्टर बने हम लोग, है ना। तो यू फील दैट वे समटाइम्स, बट देन दोज थिंग्स हैपन, देन यू आर मोटिवेटेड अगेन कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ना हमने ऐसे 10 बार बोझा भी उठाया, कोई बात नहीं, अगर 2 बार हमने जान भी बचा ली किसी की, तो देन इट इज वर्थ इट। तो यही है, तो दैट्स व्हाई आई मीन, मैं नोटार्स की शॉर्टेज है डॉइचलैंड में, मैं सबको ये बोलता हूँ कि इफ़ पॉसिबल, इफ आई मीन, करके देखो, अगर मज़ा आया तो करना इन फ्यूचर। और मॉनेटरी ऑल्सो इट पेज वेल, सो कोई हर्ज नहीं है करने में। It was very nice talking to you, and I hope you will achieve your career goals and dreams in Germany, and you will keep guiding other doctors and other people who follow, because information has to be shared. People have to be guided. Everybody receives their guidance from somewhere, so that we don't do the same mistakes that our previous like people came. So that is our responsibility to share that information guidance with others, and please do that. And I wish you all the best and very good luck. Thank you. I would also like to thank you a lot. Like first of all, what you have been doing, you are very choosy, picky about your time, and you invested that time. I've also learned a lot from your experience. I would rather say that this is the best experience that I have had till now in German, based on someone's experience. What I have learned, like you are in Germany for more than 7 years now, I would say, and so thank you very much. And it was Wonderful. really good talking to you. Wonderful. For the audience, if you like this conversation, if you have doubts, questions, write in the comment section. Like this video, subscribe to the channel. Our channel is not growing like super fast, because I know that audience is less, but still the people who are watching, they have to be little active, so that I will also be motivated to put more content and bring such wonderful people on this channel and share their experience with you guys. All right, with this, I conclude this video here. Thank you all for watching.